I'm still in control. It's out of my hands. You can never take. हाँ जी दोस्तों, क्या हाल? क्या पूछ रहे हो कि पाइमॉन ट्रैवलर को पानी में क्यों मिली? इसका कोई रीज़न? इसका यार कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ठीक है। ये जहाँ तक मुझे जो लास्ट मैंने सुना था, जो लास्ट मेरे जो मुझे चीज़ पता थी वो ये थी कि अगर ये चीज़ सच है कि पाइमॉन सीली रेस की डिसेंडेंट है, ठीक है, तो कुछ एक्सीडेंट हुआ था इसमें पाइमॉन पानी में गिर गई और काफ़ी सालों तक वहाँ सोती रही, वहीं पड़ी रही, वहीं सोती रही और वहीं बेहोश हो गई कोमा में। और उसकी जो बाकी की पूरी जो रेस है, सीली रेस, वो सब मिट गई, ठीक है। वो बन गए लैंप और पाइमॉन बच गई। और तो कोई रीज़न अब तक इसका पता चला नहीं है। ठीक है, तो आज हमें बेसिकली पहले तो नाहिदा की क्वेस्ट से पहले हमें ये वाली क्वेस्ट करनी है, ये वाली वर्ल्ड क्वेस्ट, क्योंकि वर्ल्ड क्वेस्ट जो है वो अटक जाएगी, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड क्वेस्ट अगर पूरी नहीं होगी तो नाहिदा की क्वेस्ट आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये हमें करनी है। तो वर्ल्ड क्वेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले ये कर लेते हैं, ज़रा कमीशंस कर लेते हैं, अपना रेजिन वगैरह कर लेते हैं, बाकी के लोग आ जाएंगे। कमीशन करते हैं, रेजिन स्पेंड करते हैं। आज यू लाफ यू लूज चैलेंज, नहीं भाई, आज नाहिदा की क्वेस्ट करनी है, बाकी सब सेकेंडरी। मुझे आगे की स्टोरी देखनी है। मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ इसका। आओ। You can't run. कौन सा वर्ल्ड क्वेस्ट जो न्यू वाला है? हाँ, नहीं, एक तो स्टोरी क्वेस्ट आई नाहिदा की, एक वर्ल्ड क्वेस्ट आई है ना। तो मुझे लोगों ने बताया कि वर्ल्ड क्वेस्ट अगर मैंने नहीं की तो नाहिदा की स्टोरी क्वेस्ट बीच में रुक जाएगी, क्योंकि उसको पूरा करना ज़रूरी है नाहिदा की क्वेस्ट पूरी करने के लिए। तो पहले वर्ल्ड क्वेस्ट ख़त्म करेंगे, उसके बाद स्टोरी क्वेस्ट स्टार्ट करेंगे। Time to go. Judgment. One with nature. Incinerate. You can't run. ऋषु, यो भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसकी ज़रूरत नहीं है, आप नाहिदा की क्वेस्ट कर सकते हो जो बीच में नहीं रुकेगी। अच्छा, कर सकते हैं, ओके। एक बार मैंने नाहिदा देखना, इट्स नॉट फुली बिल्ट, जस्ट चेक इट आउट। एक सेकेंड। 735400484। ये तो मेरे ख्याल से खुलेगी ही नहीं यहाँ पे। यप, यहाँ नहीं खुलेगी, मुझे बाहर देखनी पड़ेगी। हाँ, इनका पे वहीं देख रहा हूँ, akasha.cv। ओके, क्या थी? 735400484। अबे एंटर का बटन कहाँ है? ना एंका पे देखनी पड़ेगी, यहाँ नहीं चल रहा ठीक से। 735400484। ओके, नाहिदा लेवल 70, 630 एलिमेंटल मास्टरी, बढ़िया है, सही है।
3677 ठीक है, नो प्रॉब्लम। 61 डेंड्रो डैमेज बोनस सही है। 1014 ड्रीम्स दिया हुआ है। R1 इसको बढ़ा दो, बढ़िया है। है ना, बढ़िया, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो, करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। Into the wind. Boom boom! Inadmissible evidence! Cha! आर्टिफैक्ट देखो, एक मिनट यार, दोबारा खोलने दो। सारा बताया करो ना क्या क्या देखना है। 7354000484। ओके, एलिमेंटल मास्टरी 32, एलिमेंटल मास्टरी 63, एलिमेंटल मास्टरी वाला, डेंड्रो डैमेज बोनस एलिमेंटल मास्टरी वाला। क्रिट डैमेज 2 जगह है, क्रिट रेट 3 जगह है। सही है यार, गुड ब्रो गुड, डिसेंट, अच्छा आर्टिफैक्ट है। फुल F2P भाई, 100 विशेस में कलेक्ट किया। ऐसे मत बोले यार भाई, वाकई में फुल F2P होगा। F2P लोगों को पे टू विन बोल दो, उनकी भावनाएं हर्ट हो जाती हैं, आहत हो जाती हैं भावनाएं। जल्दी से यार कमीशन पूरी करके मैं नाहिदा की क्वेस्ट स्टार्ट करूं, बहुत हो गया अभी। हाँ, सीडी बढ़ा लो थोड़ा, क्योंकि 77 पे था ना। हाँ, वो थोड़ा सा कम है। बेसिकली डीप वुड मेमोरीज फार्म करते रहो, कुछ ना कुछ ढंग का ज़रूर मिलेगा। आप भी तो P2P हो, P2P नहीं P2W बोलते हैं उसको। और मैं इतना, मतलब कि 3 लेवल होते हैं गेम में ना। गेम के अंदर पेड कैरेक्टर्स के 3 लेवल होते हैं। एक होता है फ्री टू प्ले, जो बिल्कुल फ्री टू प्ले है, किसी यूज़ ही नहीं करता। दूसरे होते हैं अपने ये वाले, क्या कहते हैं यार, जो खाली वेल्किन मून खरीदते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं जो वेल्किन मून और बैटल पास दोनों खरीदते हैं। और चौथे होते हैं Everybody stand back! Incinerate! और चौथे होते हैं जो वेल्किन मून बैटल पास खरीदते हैं, उससे भी उनका काम नहीं चलता तो वो भी खरीद लेते हैं, जो जेनेसिस क्रिस्टल होते हैं प्रीमो जेम्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम अभी लेवल 2 वाले हैं जो सिर्फ वेल्किन मून खरीदते हैं, हमारे पास बैटल पास भी नहीं है। मेरे पे फ्लावर है डीप वुड का विद 26 CD बट नो EM। दे दूं उसको? नहीं 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 नहीं, EM बहुत ज़रूरी है, EM बहुत ज़रूरी दोस्त, EM वाला ही दो। सर्कुलेट में सीडी यूज़ कर लो, एग्जैक्टली। बाकी जगह EM दे दो, और सर्कुलेट के अंदर जो लास्ट में तुम्हें क्रिट रेट कम लगे क्रिट रेट दे दो, क्रिट डैमेज कम लगे क्रिट डैमेज दे दो। यो मैन प्रसिद्ध, क्या हाल है, क्या हाल है? आओ आओ यार, आज नाहिदा की स्टोरी क्वेस्ट की जाएगी, कमीशंस पूरी कर रहा हूँ, उसके बाद नाहिदा की स्टोरी क्वेस्ट पूरी करेंगे। भाग गया। 4th कैटेगरी वाले आर्कॉन भाई हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पैसा ही पैसा बरस रहा है मेरे ऊपर। तो एक दिन तुम लोगों को ना मुझे अपने सेटअप की फ़ोटो खींच के भेजनी पड़ेगी, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि क्या फटे हाल है मेरे। तुम लोगों को मेरा कैमरा बहुत अच्छा नज़र आता है ना, तुम्हें लगता है वाह कितना बढ़िया है। अभी तुम लोगों को आइडिया नहीं है।
मेरे पीसी के अंदर ये क्या कहते हैं हीट निकालने का कोई सिस्टम नहीं है। मैंने दोनों तरफ से इसका दरवाज़ा खोला हुआ है, दोनों साइड वाले पैनल जो है ना वो दोनों खोले हुए हैं और उधर से एसी की हवा आती रहती है। समझ रहे हो? ये मेरा कूलिंग मैकेनिज्म है। सही है, बहुत दिन हो गया गेंशिन नहीं खेल पाया। अरे चलो कोई नहीं, आज हमारे साथ स्टोरी क्वेस्ट करो। Yes, I see. Hopefully we'll have a good harvest this year. कोई नहीं, इस 4th कैटेगरी में मैं भेज दूंगा सीधा 2700 का पैक। अच्छा कर दो यार फिर, बहुत बढ़िया। अरे 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 यार, भाग गई। टाइमिंग गलत होगी। शिट, सामने एक और है। One with nature. तुम कहाँ जा रही हो रानी? ओके अब एक बार ज़रा फार्म कर लेते हैं, रेजिन स्पेंड कर लेते हैं। पहले चेक करते हैं रेजिन स्पेंड कहाँ करना है। रेजिन कंडेंस करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ रेजिन स्पेंड कहाँ करना है, क्योंकि अभी नाहिदा को बिल्ड करना है। नाहिदा कहाँ गई? नाहिदा बेबी ये रही, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इसको असेंड करना है। असेंशन के लिए मुझे ये चाहिए। तो पहले तो चल के डेंड्रो हाइपोथेसिस को मारना है। लेट्स गो। उसके लिए रेजिन कंडेंस नहीं कर सकते। कहाँ गया डेंड्रो हाइपोथेसिस? ठीक है। आज पता है मैं सो के उठा हूँ 11:15 बजे। फिर नाश्ता किया, मतलब ब्रश किया, नाश्ता किया, मुंह पे मैंने शायद मुंह भी नहीं धोया और सीधा मैं स्ट्रीम पे आ गया, क्योंकि मैं इसकी स्टोरी क्वेस्ट को करने के लिए इतना एक्साइटेड था। यार पता सबसे इजी हाइपोथेसिस है ये वाला। सबसे इजी हाइपोथेसिस है डेंड्रो वाला। Time to broaden the horizons again. यस Share my knowledge. You can't run. Boom boom. Chia. Ta. Ha. Ha. Ta. Ta. Lights out. Ha. यार क्रिट नहीं कर रहा यार, बड़े बड़े हाल हैं इसके तो। Chia. क्रिट ही नहीं कर रहा। क्रिट कर भाई। हाँ ये भी ना बात। हाँ मिला नहीं, लेकिन कंडेंस करना पड़ेगा। अरे कंडेंस करना पड़ेगा यार। चलो चल के करते हैं। और बताओ भाई, शांत क्यों हो गए इतने? क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अबे चैट कहाँ चली गई बे? चैट नज़र क्यों नहीं आ रही मुझे स्क्रीन के ऊपर? ऑन स्क्रीन चैट नज़र आनी चाहिए। वेट अभी चेक करता हूँ। एक मिनट, अभी चेक करना पड़ेगा स्क्रीन पे चैट नज़र क्यों नहीं आ रही। सस्ता ब्लॉगर, अरे क्या हाल है भाई? हार्ट हमारी तरफ से भी ले लो। हार्ट ही हार्ट। लवनीत भाई हेलो। अरे हेलो तो ठीक है, मेरे को कुछ बोल नहीं रहा, हमें लगा कहीं लोग गायब तो नहीं हो गए। एक मिनट ज़रा देखा जाए कि ये चैट जो है मुझे स्क्रीन पे नज़र क्यों नहीं आ रही।
डेली कुछ ना कुछ होता है ना, कभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। Should I try this time? आज चैट नज़र नहीं आ रही, मतलब कि डेली साला कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। जिंदगी ने पूरी ले रखी है। अरे वाह क्या बात है, जिंदगी ने पूरी ले रखी है। आधी लोगों को तो दिक्कत होगी ना। Work hard नहीं and कोई live चैट कर each नहीं day रहा, to the fullest. तुम तो चैट कर रहे हो, स्क्रीन पे नज़र That नहीं आ is what रही। life in Mondstadt is मेरे all फोटो के about, नीचे चैट isn't it? नज़र आनी चाहिए ना, वो नज़र क्यों नहीं आ रही? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक मिनट, हाँ गायब हो रखी यार पूरी, रिफ्रेश ही मार दिया। ये क्या चक्कर है बे? कोई ना ब्रो, होता है। अरे होता है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए यार। मेरे साथ तुम कल नहीं थे। कल जो मेरे को डांस करवाया ना मेरे पीसी ने, स्ट्रीम नहीं चली। वो डांस में दोबारा नहीं करना चाहता। अबे यार, Everything is negotiable except overtime. क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? Why does this happen to me? Why does bad things happen to good people? Arrow Gaming, hello, what's up bro, what's up? देखा था ना, आज चैट डांस करा रही है यार। लाइव स्ट्रीमिंग का मज़ा तो ये आता है ना, जब स्क्रीन के ऊपर चैट नज़र आए। ये क्या पंगा हुआ? दूसरा वाली चैट स्टार्ट करनी पड़ेगी क्या? ओहो शिट, ओ माय गॉड। एक मिनट रुको, होल्ड करो, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा मज़ा नहीं आएगा भाई साहब। स्ट्रीम लैब्स खोलना पड़ेगा। एक मिनट, मैं बस पता नहीं ये दिक्कतें आती क्यों, मुझे समझ नहीं आता। मतलब कि आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आपका फ्रेम ड्रॉप कैसे सही हुआ? फ्रेम Don't ड्रॉप we मेरा have पता a कैसे सही job to हुआ? do? एक मिनट तू चुप हो, रोज़ारिया कहीं की। मेरा फ्रेम ड्रॉप कैसे सही हुआ? मेरा लैपटॉप जो था ना वो उससे अटैच था, वाईफाई से अटैच था, ठीक है। तो मैंने उसमें इथरनेट की वायर लगा दी, मेरा फ्रेम ड्रॉप सही हो गया। अब लोग कहेंगे कि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन नहीं, पहले मेरा लैपटॉप, मेरी स्ट्रीमिंग सिर्फ वाईफाई पे होती थी, कभी ऐसी खास दिक्कत आई नहीं। एक मिनट यार रुको, मैं इसका ना, गिव मी जस्ट कपल ऑफ मिनट्स। डोंट से एनीथिंग अबाउट रोजारिया। यार तुम किस का सिंपो, ये बताओ। कभी तुम्हें रोजारिया अच्छी लगती है, कभी तुम्हें कोकोमी अच्छी लगती है, हैं? चक्कर क्या है? वाईटी चैट प्रॉपर्टीज, मतलब अभी अच्छा खासा चल रही थी, तो क्या हो गया यार? ये मेरे साथ क्यों होता है? एरो गेमिंग, अरे लैपटॉप पे स्ट्रीम कर रहे हो क्या? मतलब स्ट्रीम लैपटॉप पे हो रही है, गेम पीसी पे हो रही है। टू पीसी सेटअप है मेरा। गो टू डैशबोर्ड। एक मिनट, चैट बॉट कहाँ है? चैट टिपिंग ऑल विजिट्स, इसमें होगी चैट। उसको लगा के रखना पड़ेगा मुझे। गेम विजिट, पोस्ट, चैट बॉक्स, ये रहा। कॉपी। एक एक्चुअली स्ट्रीम लैब्स का जो चैट विजिट है ना, बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा ही स्लो है। तुम कोई क्या कहते हैं, मैसेज करोगे ना, वो मैसेज 10 सेकंड के बाद आएगा स्क्रीन के ऊपर। पर कोई नहीं, अब इस टाइम कुछ तरीका नहीं है, तो यही करना पड़ेगा। लेट्स डू दिस। बस गाइस 2 मिनट वेट करो यार, ये मेरे को ज़रा करने दो, ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है ये। अब मैंने चला तो दिया, अभी देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। नहीं चला तो रास्ते से में जा, कोई बात नहीं। कोई ना देखते तो तब पीआर हो, तो तब पर हो, टैब पर हो तो कोई सीन नहीं। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो ब्रो। आई डो नॉट अंडरस्टैंड। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी क्वेस्ट भी करनी है यार, लोग चले जाते हैं। अच्छे खासे 8 लोग थे, अब यहाँ 5 हो गए दोबारा से।
अरे अभी चाहिए क्या? देखो स्क्रीन पे चैट नहीं आ रही ना, कुछ ना कुछ। भाई गॉड, एक मिनट रुकना जरा, दूसरी तरफ जाके देखो, यहाँ आ रही है? यहाँ भी नहीं आ रही। देखो सामने वाला पूरा का पूरा एरिया खाली है। क्यों कर रहे हो भाई मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? हद ही है यार, छोड़ो, जाओ, हम नहीं बात करते तुमसे। मेरे ख्याल से नाहिदा को यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे पास ना लिटरली बुक्स बची नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बुक्स मेरे बची हुई हैं इनसे मैं कुकी को अपग्रेड करूँ, नाहिदा को छोड़ दूँ। ये सब मैं कुकी को अपग्रेड करने में लगाऊँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक्चुअली मैं हाइपर ब्लूम तो कुकी ने करना है ना। लो ये तो यहीं खर्च हो जाएंगी भाई, तो लेवल 70 करते खर्च हो जाएगी। लो जी ख़त्म। गाइस हमारे पास किताबें ख़त्म हो गई हैं। ये क्या है? रूइन सरपेंट मारना पड़ेगा। अरे छी, अरे यार, ये डायनामो और टेक्नो गेमर्स की साजिश है आपको बड़ा स्ट्रीमर बनने से रोकने की। नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे दोस्त, नहीं रोक पाएंगे। हम बनेंगे, हम बड़का स्ट्रीमर बनकर दिखाएंगे ना। हम भी बड़का स्ट्रीमर बनेंगे। एक मिनट, नाहिदा को आई थिंक नाहिदा का इतना अभी काफ़ी है। लेवल 80 तो हो गई ना नाहिदा अभी, मतलब कि बढ़ाया नहीं लेकिन लेवल 80 पे आ गई है। ठीक है, अब जो है कुकी को भी लेवल 80 पे ले आते हैं। ठीक है, रूइन सरपेंट को मारते हैं चल के। कहाँ है रूइन सरपेंट? यही है ना? नहीं तो ड्रेक है। रूइन सरपेंट कहाँ है बे? रूइन सरपेंट इनाजुमा में था क्या? हाँ इनाजुमा में था, सॉरी। ये रहा ना? नहीं तो परपेचुअल मशीन अरे है, परपेचुअल मशीन अरे। ये वुल्फ लॉर्ड है। वह रूइन सरपेंट कहाँ है बे? ब्रो इंडिया में गेंशिन इम्पैक्ट का ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं इसी वजह से मैं खाली गेंशिन इम्पैक्ट नहीं खेलता ना। आई एम ए प्रॉपर गेमर, मैं दूसरी गेम्स भी खेलता हूँ। ये तो आजकल गेंशिन ज़्यादा चल गई है, मतलब मेरे गेम पे भी ज़्यादा चल रही है ना। लेकिन कुकी में विदाउट गिल्डेड बफ 1000 चाहिए कि विद गिल्डेड बफ 1000 होना चाहिए? गिल्डेड तो लगाओ, 2 पीस गिल्डेड लगा लो, 2 पीस वॉन्डर्स लगा लो। मैंने वे लगाया हुआ है। अरे रूइन सरपेंट कहाँ है भाई? ओहो, दूसरी गेम, हाँ दूसरी गेम अपनी। अभी देखो, अभी क्या कहते हैं, होंकाई स्टार रेल आएगी, वो खेली जाएगी। फिर वुदरिंग वेव्स आएगी, वो भी हम खेलेंगे। और बाकी अपनी वो जो वाली गेम्स जो हैं, ये सारी की सारी, क्या नाम है यार इनका, गॉड ऑफ वॉर हो गई, AAA टाइटल्स है, तो हम खेल ही रहे हैं। अरे उड़ गई। गाइस रूइन सरपेंट में आज पहली बार मारने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे पे रहम रखना। ये नहीं कि आप ये नहीं कर रहे, अरे ऐसे करो वैसे करो। गाइड कर देना, मुझे बता देना कि क्या दिक्कत है। You can't run. I'm going in. Shiver. Boom boom. Incinerate. Yeah. Hey. Make yourselves a move. Let's light it up. You can't run. कहाँ गया बे? Everybody stand back. Motion to compel. Yeah. Lights out.
listen. You can't run. Motion to compel. अबे ये क्या हो रहा है? नाहिदा गई मेरी। Boom boom. Let's light it up. Punishment. Motion to compel. Teamwork is dreamwork. Oops. Boom boom. You can't run. Incinerate. यार बड़ा कम डैमेज यार, इस तो राइडन ले आता हूँ यहाँ पे। स्केल इशू नहीं है। Let's light it up. I'm going in. Shiver. यार सो तो राइडन ले आता मैं, राइडन कम से कम काम तो आती। ब्रो आई एम सो टायर्ड ऑफ फार्मिंग फंगस और नाहिदा भाई, इसलिए मैं बहुत पहले मैंने काम कर लिया था। क्रायो डैमेज बोनस, क्रिट रेट, एनर्जी रिचार्ज, वाह। यहाँ तो वो है ही नहीं, बाहर चलते हैं। अगली बार ये राइडन की टीम के साथ आऊँगा, ये राइडन की टीम का काम है बेसिकली, है ना। बढ़िया पीस मिला यार। कुकी को अभी अपग्रेड करने के लिए लेवल 70-80 तक तो अपग्रेड करना पड़ेगा। राइडन की टीम का है, हाँ तुम आ जाओ भाई। कुकी को बेसिकली अभी और क्या क्या चाहिए, ये रही। अभी 5 पीस ये वाले और चाहिए, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे हम अपनी हाइपर ब्लूम टीम बढ़िया वाली। रीस्पॉनिंग 35 सेकंड में, अच्छा फिर तो ठीक है। एम बैटल असेंड डेंड्रो कैरेक्टर अदर देन ट्रैवलर टू फेस 4, अरे वाह ये भी मिल रहा है अपने को यार। मुझे भी वो फार्म करना है, क्या फार्म करना है? मेरे को मिला है 2 वीक से ग्राइंड कर रहा हूँ, बढ़िया पीस मिल रहे हैं। और राइडन बूबा सोड दिखाना, अभी बनने दो, अभी बूबा सोड बनी नहीं। लो देख लो। अच्छा कुकी वाला बॉस फार्म करना है, तो आ जाओ फिर। मेरे पास थोड़े से रेजिन बचे हुए हैं, शायद 2 बार मैं और कर सकता हूँ, मैं 2 बार और कर सकता हूँ। एंकानोमी यानी कैज में था ना। आ रहे हो तो बताओ मैं रुकूं। कुलदीप देशमुख, 1 शॉट टीम्स आल्सो वर्क गुड। हाँ मैं वही इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ, ये राइडन की टीम लेकर आ रहा हूँ। हाँ मतलब कि मेरी राइडन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि 1 शॉट कर दे, ठीक है। ये मेरी राइडन के स्टैट हैं, 2199 अटैक है, 60, 166, 238। तो प्राइम मॉडल दिया हुआ है मैंने इसको, मैं चाहूँ तो इसको वो भी दे सकता हूँ। ये अगर मैं ये दे देता हूँ तो स्टैट बन जाते हैं 46, 166, 274। स्काईवर्ड स्पाइन से करते हैं। अच्छा EU सर्वर, ओ ओके चलो यार फिर हम ही शुरू करते हैं। Shine down. Rain outlines your fate. Huh? Huh?
work. There is no escape. Rain cutter. अभी हमारे राइडन की वो है नहीं, Shine अल्टीमेट down. ऊपर नहीं है। Now you shall perish. अबे क्रिट नहीं किया बे। क्रिट करती तो मजा आ जाता है। मेरे राइडन से तो बेटर ही है। क्रिट करती तो मजा आ जाता। HP डिफेंस अटैक एनर्जी रिचार्ज। ओके एक बार और मारना है इसको। नई इवेंट आ गया। अच्छा ये इवेंट आ गया नया, ये तो करना है आज। और ये वाला एरिया मैं एक्चुअली में ये कह रहा था तुम सबसे कि एक मिनट आई बताता हूँ मैं क्या कह रहा था। क्रिट दो तो सही है एक्चुअली, जो इसका वेपन है ना वो क्रिट देता है। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा गाइस, एक चीज़ बताओ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं 2 प्राइमोर्डियल जेड का क्या करूँ। या तो मैं साइनो को बिल्ड करूँ, साइनो को पकड़ा दूँ ये, ठीक है, तो साइनो भी अच्छा काम कर जाएगा इसके ऊपर। तो प्राइमोर्डियल जेड का करूँ क्या मैं? एनीवेज हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये देखो 2 क्वेस्ट हैं। एक तो हो गई वर्ल्ड क्वेस्ट जो एरिया को एक्सप्लोर करने वाली क्वेस्ट है। एरिया को एक्सप्लोर करने वाली क्वेस्ट पहले करूँ या नाहिदा की स्टोरी क्वेस्ट पहले करूँ? कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाहिदा की स्टोरी क्वेस्ट करने जाऊँ और बीच में वो कह दे कि नहीं पहले दूसरी क्वेस्ट करो। आई हैव सिमिलर स्टैट्स विद कैच बट लेस अटैक। मैंने अटैक थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है। दोनों रख लो। अरे दोनों तो है ही मेरे पास, पर दूँ किसको? 2 प्राइमोर्डियल जेड पड़े हुए हैं, वो देने किसको है समझ नहीं आ रहा। रीस्पॉनिंग इन 1 मिनट। सीधा नाहिदा क्वेस्ट ठीक है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ना हो कि नाहिदा की क्वेस्ट बीच में इंटरप्ट हो जाए ये कहते हुए कि यार दूसरी वाली क्वेस्ट पहले करनी पड़ेगी। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल मुझे किसी ने कहा था कि वर्ल्ड क्वेस्ट करो पहले, नहीं तो नाहिदा की क्वेस्ट बीच में अटक जाएगी। कि कोई एरिया होगा जो अनलॉक नहीं होगा, जो अनलॉक वर्ल्ड क्वेस्ट से होगा। मेरे को एक डोनेट कर दो, लो। समझ रहे हो? कहीं ऐसा ना हो ना कि कोई एरिया लॉक पड़ा हो जो वर्ल्ड क्वेस्ट करके खुलना था, फिर बीच में वो करनी पड़ेगी। वो नहीं चाहता मैं हो ऐसा। नहीं होगा ना, ठीक है चलो, तुम लोगों की गारंटी है इसलिए करूँगा। क्योंकि करनी मुझे बेसिकली नाहिदा की क्वेस्ट पहले है। नाहिदा की क्वेस्ट अपने को ही पहले करनी है। उसने खुद ही नहीं किया होगा इसलिए बोल रहा है। हाँ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। चलो ठीक है, बस अभी लास्ट मुझे मारना है रूइन सरपेंट। ये लास्ट अपन करते हैं, फिर उसके बाद सीधा नाहिदा का स्टार्ट करेंगे। ये रिस्पॉन हो रहा है 36 सेकंड्स के अंदर। गाइस स्ट्रीम लाइक कर दो, कोई नया बंदा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अपनी श्रद्धा अनुसार लाइक कर दो। और बाय द वे मैंने डोनेशन भी फिक्स कर दी है, अब स्क्रीन के ऊपर आ रही है देखो। अभी भी नहीं आ रही यार, ये क्या हो रहा है? मैंने गेम स्टार्ट करने से पहले टेस्ट किया था, स्क्रीन के ऊपर उसने शो किया था। यार ये तो बहुत गलत हो रहा है यार, पता नहीं क्या ये सीन चल रहा है। मुझे सब कुछ दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा क्या? आवाज आ रही है खाली, स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रहा। ये क्या चक्कर है यार? और शायद इसी वजह से चैट भी नजर नहीं आ रही है। कुछ ब्राउज़र की कुछ सेटिंग्स में दिक्कत है। अब ये मेरे को स्ट्रीम के बाद ना करना पड़ेगा ये काम, बैठ के देखूंगा स्ट्रीम के बाद कि क्या इशू आ रहा है। नहीं डोनेशन कोई करता नहीं, लेकिन बाई चांस अगर किसी ने की तो अच्छा नहीं लगता ना, उसकी चीज़ स्क्रीन पर नज़र ना आए। गेंशिन शुड अलाउ क्रॉस सर्वर कोऑप मोड। हाँ गेंशिन शुड डू अ लॉट मोर थिंग्स। गेंशिन करती नहीं है, वो बात अलग है। छोड़ो ना, कोई करने नहीं वाला डोनेशन। अब वो तो है। अरे कहाँ जा रही है? अरे यार ये तो बच गई। लेकिन कम से कम मुझे ये पता चल रहा है ना कि मेरी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ब्राउज़र सोर्सेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ब्राउज़र सोर्स स्ट्रीम स्टार्ट होने के टाइम पे नहीं दिखा रहा, ये इशू है।
universe. 12 Inazuma shines eternal. कहाँ गया? डन। चलो 3 और मिल गए। आई गेस कुकी का एक काम तो हो गया। भगवान तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। मैं तुम लोगों की चैट पढ़ी नहीं रहा, तुम लोग स्पॉइलर दे रहे हो। बिल्कुल भी सब्र नहीं है किसी को भी। चलो जी नाहिदा की स्टोरी को स्टार्ट की जाए। ऑलरेडी स्टोरी को स्टार्ट है, टीम चेंज कर लेते हैं बस। Sounds good to me. इतना बढ़िया पीस मिला है और सबके लोग सबके सब शांत बैठे हुए हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा। ठीक है बेटा, याद रखूंगा मैं ये चीज़, ये सब याद रखूंगा मैं। इतना बढ़िया पीस मिला है और कोई रिएक्शन नहीं दे रहा एस्ट्रो के अलावा। याद रखेंगे भाई, कोई बात नहीं। चलो, वेयर लाइज द पाथ होम, नेविगेट, लेट्स स्टार्ट। पार्टी तो इतना अच्छा पीस मिला है, एक दूसरे को बर्गर खिला देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी पहले पीस को रोल करेंगे, रोल के बाद पता लगेगा कि वो कितना अच्छा पीस है। कोई स्टोरी को स्टार्ट, नाहिदा की क्वेस्ट स्टार्ट हो गई, लेट्स गो। सिनेमेटोग्राफी अच्छी होती जा रही है इन लोगों की। Hey, isn't that Nahida? ऐसी घूम रही है रोड पे, Nahida! I didn't think we'd run into you here. सड़क पे घूम रही है। Oh, hey there. गोलगप्पे खाने It's निकली है। been a while, hasn't it? What have you two been up to? Seems like you've been enjoying yourselves. How about you? What are you up to now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. Ooh. I noticed that I have some blurry memories after saving Ermin's soul. एक चीज़ की मुझे कमी लगती है, मुझे कमी किस चीज़ की लगती है इन स्टोरी क्वेस्ट के अंदर। क्या होता है कि जिस जगह पे कॉन्वर्सेशन हो रही है, जैसे कि कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, जिस जगह पे कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, उस जगह का म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है पीछे बैकग्राउंड में। ये कॉन्वर्सेशन अगर पोर्ट ऑर्मोस में हो रही होती तो यहाँ पे पोर्ट ऑर्मोस का म्यूजिक बजना शुरू हो जाता। म्यूजिक अच्छा है नो डाउट, लेकिन कॉन्वर्सेशन से मैच नहीं कर रहा। बैकग्राउंड म्यूजिक कॉन्वर्सेशन से मैच करना चाहिए। अब बताओ, ये जो म्यूजिक बज रहा है ये क्या इस कॉन्वर्सेशन से मैच कर रहा है? सोचो क्या बात कर रहे हैं, क्या म्यूजिक बज रहा है। तो स्टोरी क्वेस्ट के अंदर कम से कम इनको एक कस्टम म्यूजिक बनवाना चाहिए ज़रूर। I almost feel like there's still something extremely important I need to do, but I can't remember what it is. Okay. What is that? Don't worry, we'll help you remember. Thank you so much. Since you're willing to help, I have something I'd like to show you. It's awkward God ऐसे ही घूम रही है वही। ये क्या है? Oh, it's beautiful. It looks like it's filled with some kind of power. Mm-hmm. I found it in the sanctuary of Suristana, but I have no recollection of it whatsoever. भाई फिर से कोई heavy story आने वाली है, heavy story. It's filled with pure elemental power that is quite similar to mine, but yet it's also a little different. ओ, रुख देवता की तो नहीं है कहीं? पुराने दिन याद आ गए, मैं प्रेशियस नाहिदा। तुमने भाई बहुत टाइम से नहीं खेली क्या गेम? इतना टाइम हो It's very गया? likely that it's connected to my foggy memory, but I can't figure out what it is. हाँ देखा, it's more likely something that greater Lord रुख देवता left behind. Traveler, do you have any ideas?
You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to let you know right away. Thanks, you two. I didn't mean to trouble you again. No trouble at all. It seems you've got a lot on your mind, and we'd like to help. मम्मा? वो इस फंगस ने मम्मा बोला? 3.4 के बाद नहीं खेल पाया। इस फंगस ने क्या बोला? मम्मा? भाई ये मामा ही बोल रही है ना मम्मी। Hey, get out! You shouldn't be around here! यार ये कितनी क्यूट है। I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. Last warning! Get out before I kick you out, you hear? Hang on. I think it's trying to tell us something. Come on यार कुसनाली, तुम्हारी बच्चे हैं सारे ये। इनकी अलग लैंग्वेज होगी, है ना? मम्मा बोलो ना इसने। But Great Dendro Arkhon, it's a monster! इतना छोटा क्यूट मॉन्स्टर। Please, don't worry. डोंट वरी यार, मैंने बड़े बड़े हैंडल किए हैं। ये क्या है? I think I understand. Seems that it wants us to follow it. You can understand it? यार ये लोग ना धीरे धीरे इस वर्ल्ड में पहले हिलीचल्स को मारना अच्छा नहीं लगता है। अब ये फंगस को मारना हमें गिल्टी फील कराएंगे अब ये फंगस मारने के लिए। Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. I can feel its anxiety and fear. It's in dire need of our help. Well, fungi are kinda cute, but... that's true. Okay, let's go take a look. Alright, lead the way, little fungus. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. अब तो हमें तो सारे It can't अग्रेसिव be ही मिल गए हैं। helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Okay. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. That's not too different from how humans think sometimes. ओए आगे गिरा पड़ा है कोई। That's what I meant by shared emotions. यार ये तो वाकई में क्या कहते हैं मन में फीलिंग्स पैदा कर रहे हैं हमारे फंगाई के लिए। It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. Seems like they might be family. So let's kill them. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. True. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahida? Strange. Very strange. Curious. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. तो सारी फंगस एलिमेंटल लाइफ फॉर्म ही तो होती है। Huh? An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from nature around them. Okay. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. Oh. Exactly. This is very interesting. I've never seen anything like it. So this is a first even for Nahida. But that's not all. There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. Okay. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away.
शक्तिमान 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 ठीक हो गई भाई आर्कॉन किस बात की अगर तुम इतनी छोटी चीज़ ठीक ना कर सको My power was compatible. Looks like everything is fine now. छोटी बच्ची का जादू Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? Oh, I can't believe the Lord of Dendro saved me. Thank you, as well as the stranger and creature next to you. Ah! It can talk? Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. स्ट्रेंज क्रिएचर Seems I'm just as shocked as you are. What? Of course Paimon can talk. Paimon isn't a strange creature. Paimon's just... Paimon! Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. ओके Oh, well, no need to take it seriously. It's no big deal. But does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how to talk? You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. So a creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms but completely different interiors, just like fungi and slimes. भाई ये क्या पाइमॉन की लोड दे रही है क्या Did this क्या बताना fungus चाह रही है हमें study ये? at the academia? It seems even more talkative than Paimon. You're not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. क्यों यहाँ क्या दिक्कत है यहाँ कौन सुन रहा है हमारी बातें यही बातें कर ले It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. अच्छा अब तक नहीं हुआ Me, 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 me. me 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 It says that it's very thankful for your help. I was confident that I knew of all the creatures in Tibet. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. Ooh. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. ओके तो ये वो है जिसकी आवाज ट्रेलर में थी My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse, yet in time, we also became the apocalypse itself. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Don't worry, we'll listen. Please continue. we always have a time for a good story I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We
came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. Oh. Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It's said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland, but unfortunately, I've forgotten. That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Yes, how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. और जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि फॉरबिडन नॉलेज जो रिलीज हुई थी किंग दशरथ के थ्रू हुई थी. I get it now. So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. I'm sorry. I hadn't considered that kind of possibility. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge, right? हाँ, लेकिन ये बात इसको याद नहीं है जो ये कह रही है ना. नॉट ओनली डिड यू सेव मी बट यू ऑल्सो ऑलरेडी रिड द वर्ल्ड ऑफ द रिमेनिंग फॉरबिडन नॉलेज. फॉरबिडन नॉलेज जो कि रुख देवता के अंदर थी. जब कुसानाली ने रुख देवता को बेसिकली डिलीट किया एरिमेंसुल में से, तो बाकी की फॉरबिडन नॉलेज भी डिलीट होगी वर्ल्ड में से. लेकिन कुसानाली को ये बात याद नहीं है. नहीं पता था, चलो बता दिया. चिंतू राबा, यू आर इनकरेक्ट बट विल नॉट टेल यू. विल फाइंड आउट सून हु यूज़ द फॉरबिडन नॉलेज फर्स्ट. अच्छा, मुझे जो अब तक नॉलेज है वो यही है कि फॉरबिडन नॉलेज जो है वो किंग दशरथ के थ्रू आई थी. और किंग दशरथ को फॉरबिडन नॉलेज जो गॉडेस ऑफ फ्लावर है, जो सीली रेस की थी, उसके थ्रू मिली थी. उसने इस दशरथ को वॉर्न किया था कि फॉरबिडन नॉलेज बहुत कैलेमिटी लेकर आ सकती है, पर वो उसने सुना नहीं. अगर मैं गलत हूँ तो हो सकता है आगे पता चले. प्लीज़ डोंट स्पॉइल. That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. My home should be safe now. We can go home. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. कोई नहीं, हम ढूंढेंगे ना. It's not your fault. You've already done everything you can. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. True. You mentioned that there were other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met their end. I'm not sure who else is still alive. Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. Leave it to me. I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. Give me a moment. I'll contact them right now. Using Wi-Fi. लो जी, वाईफाई इस्तेमाल हो रहा है. ये गया व्हाट्सएप का मैसेज ग्रुप के अंदर. That should do it. लो जी. It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Agreement? इनका अग्रीमेंट के रुख देवता से तो नहीं था, और इनको ये पता नहीं कि ये रुख देवता नहीं है. You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Okay. I see. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well.
but I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. ये तो कह रही थी मुझे पता नहीं मेरे फैमिली मेंबर कितने बचे हैं. But didn't you say that you don't know where they are? Exactly. Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. अच्छा जहाँ मरे थे वहाँ की जगह पता है इसको. लो जी होम कमिंग स्पाइडरमैन होम कमिंग. अब ये म्यूजिक देख रहे हो. ये म्यूजिक बहुत अच्छा है. ये म्यूजिक बहुत अच्छा है. Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine? There It's is Nahia. also Hello, hi, different? hello. What's up? The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. What? Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories. It did. That Yes. sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. सब बढ़िया ब्रो, सब बढ़िया. नाहिदा की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट चल रही है और यूजुअली सेकंड स्टोरी क्वेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होती है किसी भी आर्कॉन की. इसलिए आज तक हमें वेंटी की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट का वेट है. अब तक वेंटी की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट नहीं आई है. राइडन की आ गई है, जोंगली की आ गई है, इसकी भी आ गई है, इसकी तो चली रही है. नाहिदा की सेकंड क्वेस्ट कर रहा हूँ. यस. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. कहाँ जाना है? ओह अच्छा तो फॉलो The करना है. road here is a little rough. I'll lead the way. हाँ बिल्कुल चलो. Don't worry, Paimon can handle any road! हाँ तो हवा में उड़ती हुई जाती है ना. Enemies! You're up, traveler! आओ वे. You are not welcome here. Motion to compel! Judgment! Incinerate! Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive वेंटी की the सेकंड स्टोरी apocalypse. क्वेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? वेंटी की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वेंटी इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कॉन. स्टोरी वाइज, लोर वाइज वेंटी को बहुत कुछ पता है. ठीक है, इस वजह से शायद वेंटी की जो सेकंड स्टोरी क्वेस्ट है, ये कहा जा रहा है कि वेंटी की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट शायद 4.3 की अपडेट में आएगी, जब मॉन्स्ट्रेट के जो दूसरे एरिया हैं जैसे कि सी ऑफ डेंडलायन और डॉमन पोर्ट, दो जगह हैं जो बहुत बार मेंशन हुई है, अब तक देखी नहीं है. तो जब मॉन्स्ट्रेट का एक्सपेंशन आएगा तब वेंटी की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट आएगी और तब कोई बहुत बड़ा स्टोरी रिवील भी होगा शायद, इसलिए उसको बचा के रख रहे हैं. एक्सपेंशन में आगे शायद. हाँ एग्जैक्टली भाई. Hey! Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. The Last of Us, fungi. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. ओके. मैं मॉन्स्टर के ग्रैंड मास्टर वारका के लिए सेव करूँगा. पता है एक ना वो है, एक थ्योरी है, वो थ्योरी ये है कि ग्रैंड मास्टर वारका जो है ना, मतलब एक बंदे ने फ़ैन फिक्शन बनाया था कि ग्रैंड मास्टर वारका जो होगा वो फटुई हार्बिंजर्स की जो 8th सीट जो अभी खाली हुई है इसकी रोजलिन की, या फिर जो स्कारामूच की सीट खाली है उनमें से कोई एक सीट ले लेगा.
मतलब ही विल बिकम अ फटुई हार्बिंजर, ग्रैंड मास्टर वार का थ्योरी है, लेट्स सी। It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is The most important instinct of any life form possesses adapting to the environment. I don't think that should surprise you. इसके बोलने का तरीका सुनना, that should surprise you, पाइमॉन। मतलब कि पाइमॉन ने भी कुछ ऐसा किया हुआ है क्या? क्या ये पाइमॉन की एक्चुअल फॉर्म नहीं है? पाइमॉन कुछ और है और उसने खुद को अडेप्ट करने के लिए ये फॉर्म ले लिया है। ये भी हो सकता है कि जब मॉन्स्टेट का सेकंड आर्कॉन इंट्रोड्यूस होगा तब जाके आएगा। मॉन्स्टेट का सेकंड आर्कॉन इंट्रोड्यूस होगा। मॉन्स्टेट का सेकंड आर्कॉन कौन है भाई? मॉन्स्टेट का तो एक ही आर्कॉन है, वेल्टी। Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely difficult to explain. Putting it as simply as possible, changing form requires energy, and energy comes with time. Okay. लोग बोल रहे हैं प्लेबल होगा। हाँ हाँ, प्लेबल तो होगा ही वो। You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear fruit overnight. True. I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Nahida. Paimon gets it now. Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. Okay. How much farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? हाँ क्यों नहीं? Huh? Oh no, Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. यार गेम्स के अंदर ये कब होगा? NPC He seems to enjoy taking care of others. NPC की वॉकिंग स्पीड जो होती है ना, वो हमारी रनिंग स्पीड से स्लो होती है और हमारी वॉकिंग स्पीड से तेज होती है। यार क्या बेवकूफ़ी है ये। So, does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? What if we fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who. I think we may have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend and the other was my child. Oh. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. Okay. Oh, then it must be a really cute name. You know, like Bongo Head. You have an odd taste for names. Huh? Paimon thinks that name is great. Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. It's... जब बॉस ड्रॉप 3 चाहिए तब 2 मिलते हैं और एक एक्स्ट्रा रन करना पड़ेगा। ये ऐसा ही होता है। Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten many important things. अपने बच्चे का नाम भूल गई? Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Yes, this way. We're almost there. और हम आ गए हैं एक विदरिंग जोन में। मुझे लगा था मैंने सारे विदरिंग जोन हटा दिए हैं, ये कैसे बच गया अभी?
हमने सुना था कि मॉन्स्टेट का फाउंडर एक आर्कॉन है, वो टाइम मैजिक यूज करती है। The withering. यही है वेंटी की बात कर रहे हो तुम। Yes, I have heard humans also call it that before. गॉड ऑफ इस्टरोथ। इस्टरोथ वॉज वन ऑफ द शेड्स ऑफ प्राइमोडियल वन, लेकिन वो आर्कॉन नहीं था, ठीक है, जिसे गॉड ऑफ टाइम भी बोलते हैं। और इंकानोमिया में जिसका नाम कायरोस है, वो इस्टरोथ है। तो कहते हैं इस्टरोथ और वेंटी का बहुत क्लोज कनेक्शन है। It's the last form we take when we are at the end of our life. अच्छा, तो ये विदरिंग बन जाते हैं। Paimon doesn't understand. It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. अच्छा, तो ये विदरिंग जोन है। So, this is how the withering is formed? न्यू लोर। Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after forbidden knowledge has disappeared. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the withering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. और न्यू रेवलेशन आर्कन को चेस्ट के लिए मार देते। सब करते यार, मैं कौन सा कुछ अलग कर रहा हूँ। They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore. I just hope that they can all make it back home. रेवन भाई, हेलो आओ। It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. I understand. Just leave it to us. So you're worried about me? It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake. But when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Then let's do this! We've dealt with the withering countless times already. Exactly. Let's do this. Lights out. As one with wind and cloud. Into the wind. Teamwork is dreamwork. अरे Looks like overtime today. You can't run. Wrap up a flame. Shiver. Balloon. भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। One with nature. Let's light it up. Let's retreat a little. Everybody stand back. The wind knows me. कहाँ गया विदरिंग का बल्ब? ये रहा। Arkhon is worried about Nahida. हम सब we all are worried about Nahida. क्या बात कर रहे हो? मैं अकेला थोड़ी हूँ। As I expected, it's the last of my kind that I'm aware of. So it wasn't able to make it to the end.
If only it could have held on just a little longer. I hope that you will be free of this pain after returning home. गाइस जो भी नया आया स्ट्रीम लाइक कर देना प्लीज. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the withering makes Paimon sad. It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. An external form is but a gift of time. Through growth comes change, and even abandonment of previous forms. However, our true nature is not so easily affected. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think I got something. ये सही रिमोट कंट्रोल लेके घूम रही है. Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. So, they found a fungus that matches the description I gave them. It's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. ज़्यादा दूर है? कितना दूर है? अरे तो काफ़ी दूर है भाई. वो उतरेगी मोतीमिया फॉरेस्ट में. नाम भी क्या है? मौत. Venti saying I am the weakest Arkhon right now. Bro was holding the whole Celestia with his animo power. Venti झूठ बोल रहा है. एक नंबर का झूठा है. We're close now. It's just a little further inside. But there are so many fungi here. They're probably all ordinary fungi, right? Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. They are very important to us. बस तुझे दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं. They can be reasonable, as long as we try to communicate. Okay. What should we do? You're the only one who can make it through, right? But you'll need Nahida's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? You want to transform into a fungus? But we don't have time for growth. ये बॉस कब आएगा लास्ट में? Nahida is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Exactly. Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. We may not be able to avoid a fight. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family, then I'm willing to try. All right. You have great elemental power, so you may be able to do it. You will have to use power equal to that which is required to break through the limitations of time. I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation process a little easier. क्या हम फंगस बन के घूमेंगे? All right, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. As am I. I'm not joking at all. All right. Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then why don't we give it a try now? Okay. Good luck, Lord of Dendro. Let's see क्या होता है. ये इसका मूव है ये. Wow! You really turned into a fungus! It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you all help me determine which one it is? Oh, how do we do that? अरे एलिमेंटल साइट और क्या? I'll get close to them while you make your way over from above. You should be able to identify them using elemental sight since they're elemental life forms. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. Okay. Got it. Let me lure away the fungi up top and make way for you. All right, good luck, Nahida. Let's go, traveler. ये क्या हम फंगाई बन के घूम रहे हैं?
तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा इसको। ये क्या हो रहा है? There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around it. Why is it reacting like that? Oh? Uh-oh, the fungus on patrol noticed me. Nah. ना अरे Venti, Barbados, Raiden, Beelzebub, Nahida, Boer, then Zhongli, why Morax? Wow, new revelation. Zhongli, Morax. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखना पड़ेगा। इन सब के जो नाम हैं वो डीमंस के नाम पर हैं। वो सब डीमंस के नाम पर हैं। ना चला गया। पीटी देता है तो मैंने सब में। यस ट्रू, एंड मोरेक्स इज आल्सो अ डीमन नेम। हाँ, It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. I should hurry and make my way through. वाह, पहली बार फंगस के पर्सपेक्टिव से खेल रहे हैं। बीमार फंगस ये है, ये पड़ा हुआ है जो यहाँ पे। This is the spot. There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. ओके, अब मेरी बारी है। अब मैं क्या करूं? ये रहा। So this is the one. Understood. लगता है कि जोंगली एंड वेंटी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें आइडिया नहीं है। क्योंकि 7 में से 2 ओरिजिनल आर्कॉन वही हैं, बाकी सारे के सारे सक्सेसर हैं पुराने आर्कॉन्स के। Nahida, what's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, we simply wait for it to wake up. Who are you? I apologize. Language is not easy. Need long time. It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. मीमी नामी मोमी, ये करेगा वो। Apocalypse ended? Go home now? जोंगली प्राइम फॉर्म में बहुत बैडएस था। मेरे को आर्कॉन वॉर देखना है एनीमे में। देखते हैं एनीमे की स्टोरी क्या होगी, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। Unfortunately, I've forgotten where home is. I was hoping you still remembered. I remember. Really? That's great! Home. Dendro Dragon. डेंड्रो ड्रैगन। Dendro Dragon. Ah, yes, the Dendro Dragon. I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. But yes, our home is the Dendro Dragon. Oh, wait a minute. Hyman's confused. Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? आर्कॉन वॉर आर्क एनिमेशन वुड बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ यार, मज़ा तो आ जाएगा, लेकिन देखते हैं होता कि नहीं होता।
वही तो मैं सोचूं कि जोंगली ने इतने सारे कांड किए, सारे कॉन्ट्रैक्ट एंड करने के लिए, मगर फिर भी ये बोला कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट किया है। Yes, they're both dragons, but Apep, the Dendro dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. अच्छा, तो शी नोज अपेप को। But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? Because we live inside the Dendro dragon. सेम हियर पाइमॉन, सेम The हियर। Dendro dragon. Inside. Very big. Ooh. Mountains. Water. Trees. Us. There is an entire world inside the Dendro dragon's body. The Dendro dragon nurtured the earliest life forms and protected us inside of itself. ज़ोरो फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी। डेंड्रो ड्रैगन्स 7 ड्रैगन्स में से एक है। असली में वर्ल्ड बॉस वाला नहीं है, ये ओरिजिनल वाला थोड़ी देर से दिखाएगा। ये वही है जो फर्स्ट डिसेंडर से लड़े पर हार गए थे। हाँ, तो ये वो वाले हैं जो 7 प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स थे ना, ये उनमें से एक है जो क्या कहते हैं, जो 7 ओरिजिनल बिशप लॉर्ड्स थे उनमें से एक है डेंड्रो ड्रैगन। ये चल क्या रहा है? नाहिदा की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट ब्रो। It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. गाइस, जो भी नया आया है स्ट्रीम को लाइक कर देना प्लीज़। I'm still confused. सॉवरन्स, हाँ, जो 7 ड्रैगन सॉवरन्स थे, ये हैं वो। प्राइमोर्डियल 1 से पहले ये रूल करते थे बात एग्जैक्टली। प्राइमोर्डियल 1 और उसकी 4 शेड्स आकर इन ड्रैगन से लड़े थे। Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro dragon is much, much larger than any Dendro slime. Wait, then if that's the case, doesn't that imply that Apep has also been contaminated by forbidden knowledge? ओरिजिनल किंग से ड्रैगन ये, हाँ, तभी तो वो जो 2 बिशप्स नहीं है जिनको हम इकोनॉमी में लड़ते हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए ना सारे के सारे। Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? I haven't seen this expression on you before. Apep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, then a big void will also form inside the dragon! I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen Apep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization? वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितने भी आर्कॉन्स हैं उनके जो सेकंड स्टोरी क्वेस्ट है उसके एंड में कोई ना कोई बॉस फाइट ज़रूर होती है। जोंगली की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट में एजदहा आया, राइडन की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट के अंदर राइडन से ही लड़ाई हुई हमारी, जो कि भी डोमेन बना हुआ है। अब इसकी सेकंड स्टोरी क्वेस्ट में, नाहिदा की सेकंड स्टोरी क्वेस्ट में हम डेंड्रो ड्रैगन से लड़ने वाले हैं। वेंटी की फर्स्ट क्वेस्ट में ही वो आ गया था ड्वालिन, लेकिन सेकंड स्टोरी क्वेस्ट में क्या आएगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। But anyway, Apep disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring unimaginable pain all the while. It's probably in pain as we speak. Yes! How could I have forgotten? ये चीज़ भूल गई थी ये। वाह, तेवात हिस्ट्री कैन बी चेंज्ड इजीली, दैट्स व्हाई जोंगली वांटेड अ वे टू प्रिजर्व इट। हाँ, तभी तो वो हमें कहता है कि वी आर लाइक अ बैकअप ऑफ तेवात हिस्ट्री। जोंगली न्यू अबाउट रिमंसुल, और ये भी कहते हैं कि जोंगली इज ऑल्सो अ डिसेंडर, दैट्स वाई जोंगली अब तक रुख देवता को भूला नहीं है। तभी जोंगली की सब कुछ चेंज हो गया रुख देवता के बारे में। बस जोंगली की जो लाइन है अबाउट 7 आर्कॉन्स, वो अब तक वैसे की वैसी ही है कि ओनली 2 ऑफ द ओरिजिनल 7 रिमेन्स। अगर रुख देवता डिलीट हो गई और जोंगली से भूल जाता तो जोंगली कहता ओनली 3 ऑफ द ओरिजिनल 7 रिमेन्स, क्योंकि फिर जोंगली के हिसाब से नाहिदा भी ओरिजिनल डेंड्रो आर्कॉन होती है, लेकिन अब तक वो 2 का ही नाम लेता है, ओनली 2 ऑफ द 7 ओरिजिनल रिमेन्स। If the Dendro dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form and will all be dispersed. मे बी पॉसिबल है अजदहा जियो ड्रैगन है, क्योंकि काज़म में जब लड़ाई हुई थी तो वो बहुत साल पहले हुई थी
और एजदहा करोजन से सफ़र करता है तो पॉसिबल है एजदहा इज़ मोर देन 4000। एजदहा इज़ ओल्ड, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि 7 जो ड्रैगन सॉवरन्स हैं, इट इज़ सेड कि जो जोंगली है, जोंगली जियो ड्रैगन था जो सॉवरन से लड़ने पे हार गया, जो उनसे लड़ाई सेलेस्टिया से प्राइमोर्डियल वन से लड़ने पे हारा था, और बाद में उसको इन्होंने ऑफ़र कर दिया था कि अब तू हार गया लेकिन यू कैन बिकम द आर्कॉन नाउ। तभी जो तुम देखोगे जोंगली की जो एक्जूविया फॉर्म थी वो ड्रैगन थी, याद है? जोंगली की ओरिजिनल फॉर्म एक ड्रैगन है, तो मे बी जोंगली इज़ द रियल जियो ड्रैगन। Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. अरे इतनी देर में याद है ये चीज़ें से? Who is Electro Dragon? We don't know. Electro Dragon अभी तक तो कोई आया नहीं है। Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Dead. ओरोबाशी Yes, एलिमेंटल I'm ओरोबाशी sorry. इलेक्ट्रो ड्रैगन नहीं था। You're right. अगर तुम We ओरोबाशी don't सोच have रहे time हो to panic. तो ओरोबाशी नहीं था। Have you two ever seen anything like this before? No. No. Its power feels very familiar. Like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. वो तो स्नेक का ड्रैगन है। वैसे ड्रैगन्स आर आल्सो कंसिडर्ड स्नेक्स विद विंग्स एंड फीट। वाओ, नाइस थ्योरी। मैंने ये नहीं सोचा और आप सही कह रहे हो, क्योंकि करोजन की वजह से जोंगली बैक डाउन किया आर्कॉन के पोजीशन से। हाँ, और रेक्स सेपिस भी ड्रैगन फॉर्म में था। हाँ, है ना। और ऊपर से अगर तुम जोंगली की स्टोरी पढ़ोगे ना, तो जोंगली की स्टोरी में होता है मैनी ईयर्स अगो रेक्स लैपिस डिसेंडेड। ये नहीं कहते रेक्स लैपिस वाज बॉर्न, ये नहीं कहते रेक्स लैपिस वाज, समझ रहे हो? लाइन है रेक्स लैपिस डिसेंडेड। अब डिसेंडेड का मतलब क्या होता है? स्टोरी में लिखा हुआ है। जोंगली की स्टोरी पढ़ना I'm बहुत अच्छी counting है। on you all. Your info is crucial to us now. और ये लॉगिन किया गूगल में नाहिदा ने। Let's wait for their reply again. Though I know waiting can feel unbearable at a time like this. ये सेब खा रहे हैं। ना ना। Family bringing fruit. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home. Leave. Hard decision. Don't know. They are weak. I worry. ओह, इसको पर चिंता हो रही है अपनी फैमिली की। If waiting, then I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us, no matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. Can you do one last thing for it while we wait? बाय द वे आर्कन, वो चेस गेम में सिन्योरा पॉन है और उस चेस गेम में पॉन वाज हैंगिंग। इट कुड हैव बीन टेकन बाय रुक एंड नाइट, बट नाइट टुक इट। हाँ, नाइट टुक इट एंड नाइट इज, अब देखा जाए तो कहते हैं कि नाइट ने उस पॉन को लिया, ठीक है, लेकिन राइडन की जो नोसिस है वो नाइट नहीं है, राइडन की नोसिस बिशप है। ये बात ध्यान रखना, या ध्यान देना, राइडन की जो नोसिस है इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ बिशप, नाइट की फॉर्म में नहीं है। Of course, I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Tend, soy, food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. ओके ब्रो, एक क्वेस्ट है मेरा। हाँ बताओ। अगर जोंगली डिसेंडेंट है तो वो 7 सॉवरन में कैसे आएगा? नहीं आ सकता है 7 यू अभी ये नहीं पता ना कि 7 सॉवरन जो हैं इसी रेल्म के थे कि नहीं थे, अभी नो आइडिया। हो सकता है एनीमे के अंदर कुछ बताएं। होल लोर इज़ रियली कन्फ्यूजिंग। हाँ, अभी एक्चुअली क्या है ना,
इन्होंने लोर पता है क्या है बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि सारी की सारी लोर बता दी है। यूजुअली चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, अगर किसी आप फिल्म को देखोगे स्टोरी बिट बाय बिट पता चलती है। हम लोगों को गेंशिन की पूरी स्टोरी ऑलरेडी पता है, लेकिन बीच में बहुत बड़े बड़े छेद हैं, है ना। हमें पता है कि पहले क्या हुआ था, हमें पता है कि सेलेस्टिया क्या है, हमें पता है कि सरिसा क्या करना चाह रही है, बल्कि सरिसा को आने में भी 3 साल हैं कम से कम, हमें सब पता है। लेकिन बीच में उन्होंने बड़े बड़े छेद छोड़ दिए हैं और एक क्वेस्ट जो है होल्स को फिल कर रही है धीरे धीरे, इसलिए कन्फ्यूजिंग है। है ना, तो बेसिकली ये क्या कहते हैं बहुत बड़ा फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा है। Understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. मारने का है किसी को, बताओ किसको मारने का। आओ पहले ये खा लें हम। बात करें इससे, क्या कहता है ये। हेल्प एंड द फार्मलैंड। हम बिल्कुल ही कोने में आ गए क्या मैप के? हम मैप के बिल्कुल ही कोने में हैं। आगे फाउंटेन है। Water the farmland. Water the farmland. Chivalry will never die. We planted all the seeds. It's time to handle the invading plant life. कहाँ गई हमारी रोजारिया? Make sure to keep up. फाउंटेन आर्कन का डिज़ाइन लीक्स ट्रैश है। हो सकता है जानबूझ के किए उन्होंने। That should be all of them. Yeah, I've calmed down now. But it doesn't seem like there's too much we can do until we receive some new leads. Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? फाउंटेन का लोर पक्का सीली रेस से रिलेटेड होगा जो डिस्ट्रॉय हुआ था, और मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था बस एक सर्वाइव कर पाई थी जो गॉडेस ऑफ फ्लावर थी। हाँ, गॉडेस ऑफ फ्लावर वॉज द सोल सर्वाइवर ऑफ सीली रेस। ब्रो मेरा क्वेश्चन आंसर करो कि हाँ बोला सर, क्वेश्चन तुमने बोला तो मैंने कहा तो बताओ। पुल्स कैसे बचाएं? पुल्स कैसे बचाएं? पुल्स बचाने का एक तरीका है, 10 पुल करने के बजाय सिंगल पुल किया करो, ठीक है। जहाँ तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर मिल गया वहीं पर पुल करना बंद कर दो, है ना। लोग कहते हैं कि आगे पुल करोगे तो तुम्हारी पिटी बनेगी, जो होगा वो करना है तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें कैरेक्टर बैनर और वेपन्स बैनर दोनों पे पुल करना है तो कभी भी 10 पुल नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा मोटो है कि मुझे कैरेक्टर बैनर पे पुल करना है, वेपन बैनर पे पुल करना है, तो सिंगल पुल करो। शेखर सिंह सवाल तो पूछो दोस्त अपना। फाउंटेन के एक्स्ट्रा एरियाज अटलांटिस जैसे होंगे अंडर वाटर। नीलू इज रीइंकार्नेशन ऑफ गॉडेस ऑफ फ्लावर। नो, शी इज नॉट। और दूसरी चीज़ की एक थ्योरी है कि जो हमारी पाइमॉन है ये भी सीली रेस की डिसेंडेंट है। सीली रेस की डिस्ट्रक्शन से पहले ये किसी तरीके से पानी के अंदर गिर गई थी और वहाँ पड़ी रही जब इसने बाहर खींच के निकाला। आप बहुत नॉलेजेबल हो लोर से रिलेटेड, बाकी सब स्ट्रीमर्स को कुछ नहीं पता होता, बस कहते गेंशिन बोरिंग है और स्टोरी स्किप कर देते हैं। भाई गेंशिन का 70% मज़ा तो उसकी स्टोरी में ही है। गेम प्ले क्या है गेंशिन का? गेंशिन के गेम प्ले में बिल्कुल भी स्किल नहीं लगता, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर को थोड़ी देर खेलोगे आप नॉलेजेबल हो जाओगे इस कैरेक्टर को लेके, फिर क्या बचा गेम के अंदर अगर आप स्टोरी नहीं पढ़ रहे तो।
मैं बोलूँ तो गारंटीड है तुम्हारा द पिटी एक स्कैम है। हाँ Well, the history of dragons starts from the very beginning of Teyvat. लो अब आ रही है लोर, आ रही है लोर। लोर इज हेयर। बाकी शेखर सिंह अपना सवाल तो पूछो ब्रो, आस्क योर क्वेश्चन। Sumeru was a Pep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. एग्जैक्टली। Oh, so there was no desert back then? शनहे का अटैक मेरा 3K तक कर दिया है तो मुझे क्रिट रेट और क्रिट डैमेज में फोकस करना चाहिए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। शनहा बेसिकली अगर आपके पास अयाका है तो शी इज़ नॉट वो कहते हैं ना, मतलब कि शी इज़ नॉट एक्चुअली एन ऑन फील्ड DPS। ऑन फील्ड DPS आपकी अयाका ही है, शनहा तो उसको बफ करने के लिए है, ठीक है। तो अगर आपका अटैक बहुत ज़्यादा आपने कर दिया है तो डजंट मैटर। प्रतीक यो व्हाट्सअप, ऑल गुड ब्रो, ऑल गुड, ठीक है। लेकिन आइडियल किसी भी कैरेक्टर के लिए आइडियल चीज़ यही रहती है कि अगर आप उसका क्रिट रेट क्रिट डैमेज बढ़ा सकते हो तो बढ़ाना चाहिए, हमेशा बढ़ाना चाहिए, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand. Celestial nail, celestial nail, celestial nail. गाइस आप हमारा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक ऊपर दिया हुआ है डिस्कॉर्ड का पिन कमेंट के अंदर। वहाँ पे भी हम पूरे टाइम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। एक मिनट मैं आपको रोल दे दूँ, मैनेज रोल मैं आपको दे दूँगा जैसे आप ज्वाइन करोगे। अभी सेल्फ रोल का सिस्टम नहीं है पर मैं आपको रोल देता रहूँगा जैसे जैसे कोई आता रहेगा। लोग बोलते हैं कि 3K अटैक कर दो बस छोड़ दो क्योंकि शनहा को क्रिट रेट और क्रिट डैमेज से फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि क्योंकि ऑन फील्ड DPS नहीं है। अगर आप शनहा को ऑन फील्ड DPS बनाओगे यानी कि उसी से लड़ोगे एनिमीज से तो आपको देना पड़ेगा। मुझे पता नहीं चला वो नेल सुमेरु में कहाँ लोकेटेड है, मुझे तो दिखा नहीं। कैज़ अंडरग्राउंड वाले से लिंक्ड है क्या? नहीं, वो जो नेल है ना, वो नेल कहते थे कि जहाँ पर वो नहीं है जो जहाँ पे यार वो गॉडेस ऑफ फ्लावर का मकबरा टाइप का है, कहते थे वहाँ पर है, लेकिन वो नेल अभी हमें भी नहीं पता था कहाँ पर गिरा है। अभी ये देखते हैं क्या बताती है। In an attempt to adapt to its new environment, a Pep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. स्टोरी करने में बहुत मज़ा आता है, जो मेन स्टोरी है वही। मेरे को तो सारी स्टोरी करने में मज़ा आता है। गेंशिन की स्टोरी इसलिए जो नई गेम्स आ रही है ना, होंकाई स्टार रील आने वाली है या वुदरिंग वेव्स जो नई गेम आने वाली है, जो कह रहे हैं कि होंकाई इसके गेंशिन के कंपटीशन में उतार रही है, उन गेम्स की अगर स्टोरी अच्छी नहीं हुई ना मैं गेम्स खेलूंगा ही नहीं। No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of adapting. हाँ वो एक्सटर्नल इटर्नल ओएसिस कहते थे कि वहाँ पर है, पर वहाँ पर तो दिखे नहीं हमें भी। शनहा मेरी सपोर्ट है याका के लिए। हाँ फिर सही है, फिर आप खाली अटैक बढ़ा के छोड़ो उसका। A Pep has always seen itself as the master of Sumeru and has refused to recognize the new order that was established. Even now, it probably still holds great hostility toward the gods. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, it's been unable to stir up any trouble. Conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be found. नया वर्ल्ड क्वेस्ट है वो करना, उसके बाद उसके लोर कैटेक्लिज्म रिलेटेड हैं, वो भी मज़ा आएगा। नया क्वेस्ट भी करना था। मैंने एक्चुअली इसके स्टार्टिंग में ये बात पूछी थी कि मैं नया क्वेस्ट करूं पहले या नाहिदा ही क्वेस्ट करूं, तो सब बोले कि यार पहले नाहिदा ही क्वेस्ट कर लो, वर्ल्ड क्वेस्ट बाद में करना। मैंने कहा ठीक है फिर। As far as I know, a Pep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it. Maybe this is why a Pep was contaminated. मेरी शनहा और अयाका देख सकते हो क्या, और बताना क्या सुधार करना होगा। हाँ अपनी आईडी भेज दो, देख लेते हैं। I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. Return to the withering zone and speak to the elemental life form. Okay. सब नाहिदा क्वेस्ट इसलिए बोले क्योंकि सबकी देखना है कि नया वीकली बॉस कैसा है। Thank you, Lord of Tendral.
You really like them, don't you? Family. Like. Do not like our family? पाइमॉन की कोई फैमिली नहीं है, पाइमॉन अनाथ है। That's not what Paimon meant. It's just that you guys aren't actually the same species. शेखर सिंह, अभी देखता हूँ भाई, मुझे जरा 2 मिनट दो। Does that matter? Family likes me. I like family. Paimon doesn't quite understand. नया वीकली बॉस आपका 10% साइज, एपेप का 10% साइज का भी नहीं है। What अच्छा it's वो जो trying to say is that as बैप्टिस्ट long है। as family members get along well, then nothing else matters. You place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge, and connections we've made to be more important. These are all things that are more reliable than mere external appearances. These are the fruits of time, and the essence of what it means to grow. Orphan Paimon still Paimon hiding gets it something. now. Looks can always change, so what's inside of us is more important. मेरी कुकी भी देखना, EM स्पेशली EM एंड ER, हाँ देखता हूँ। Paimon would still follow you around. Wait, would you not be able to recognize Paimon? Paimon in short, fungus aren't racist like you exactly. Oh? लो जी, व्हाट्सएप का मैसेज आ गया। Thank you. व्हाट्सएप का मैसेज आ गया नाहिदा का। Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. It appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this crystal works, then a pet may be in danger. गाइस जो भी नया बंदा आया स्ट्रीम को लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। Sorry. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं ना हरे हरे रंग के। अरे मैं कह रहा हूँ कि हाँ, कुकी को भाई ER की ज़रूरत नहीं है, EM दो, क्योंकि अल्टीमेटली जो हाइपर ब्लूम रिएक्शन कुकी ट्रिगर करती है वो अपनी E से करती है ज़्यादातर, Q से इतना नहीं करती। ते बाद व्हाट्सएप एक्सक्लूसिव और आर्कॉन्स ओनली। हाँ, इनका अपना Maybe व्हाट्सएप it's ग्रुप बना हुआ because है। the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? अरे फ्री में मिला है ER, देखो तो सही। अच्छा अभी देखता हूँ, ये जरा सीन I ओवर do. हो। What about it? ये सीन ओवर होगा तब मैं शेखर की भी आईडी देखता हूँ और तेरी भी आईडी देखता हूँ भाई। 1 मिनट। The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us and that there is value in preserving it. ओके The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left. Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? मैं तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, केयरफ्री होकर, कहीं सेलेस्टिया से खोपचे में ना ले ले। उसको डर है ना, उसको डर है, और इसी डर से तो उसने इसको डरा दिया था। जो वो था दोतोरे था, दोतोरे को भी उसने फाड़ दी थी। कहा था कि भाई ज़्यादा बोलेगा तो मैं नोटिस कर दूंगी यहीं पे डिस्ट्रॉय, है ना। और फिर जब हेवनली प्रिंसिपल्स आएगा ना उससे तू लड़ियो। फिर दोतोरे भी थोड़ा पीछे हो गया था। That's not very likely. The power of Irminsul covers every inch of the land. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru, a murky place that no one can return from. कुकी लेवल अप होने पर EM नहीं देती, कुकी लेवल अप होने पर HP देती है। Yeah, that must be the chasm, right? यहाँ तक मुझे याद है। But I may what be is wrong. it doing there? It's impossible to preserve forbidden knowledge, but what if it can be converted to a different form? Okay. I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Dotore backed off faster than her sibling in Chasm, exactly. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. If you are unable to reach the destination, 1 मिनट।
फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन सीम्स दैट एपेक माइट बी टर्म। देखा इसने अभी मैसेज आया था ना, इफ यू आर अनेबल टू रीच द डेस्टिनेशन प्लीज। अभी देखो क्या बोला है इसने, यही चीज़ मैं कह रहा था, मैं यही चीज़ कह रहा था। सब लोग कह रहे नाहिदा की क्वेस्ट कर लो, नाहिदा की क्वेस्ट कर लो। दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैसेज क्या है, इफ यू आर अनेबल टू रीच द डेस्टिनेशन प्लीज कंप्लीट द वर्ल्ड क्वेस्ट पैरल्स इन द डार्क फर्स्ट। पैरल्स इन द डार्क, अच्छा वो क्वेस्ट तो हो गई है, सॉरी वो क्वेस्ट तो हो गई है, पैरल्स इन द डार्क। ये यही क्वेस्ट तो नहीं कि स्प्लेंडर्स ऑफ द स्प्लेंडर स्काई दैट डे। चलो चलते हैं, लेट्स सी कहाँ लेके जा रहा है ये। Scenery is wonderful. ये लो, Surely enough to convince anyone to become a wanderer. हेड टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द chasm। चलो chasm चलते हैं, यहाँ पे। अरे भाई कुछ नहीं करो, मुझे भी आया था। अच्छा chasm में जाना पड़ेगा। लो जी, कहाँ की क्वेस्ट कहाँ ले आई। ये देख रहे हो स्ट्रेंज स्टोन स्लेट, ये भी बड़ी फैली हुई सी वो है लोर। चलो पहले मैं ज़रा शेखर की आईडी और प्रतीक की आईडी चेक कर लूँ। शेखर भाई हो यहाँ पे? इफ़ यू आर हेयर तो मैं तुम्हारी आईडी चेक करूँगा, अगर नहीं हो देन आई विल मूव फॉरवर्ड। प्लीज़ रिप्लाई इफ़ यू आर हेयर। 863619 अरे मैं यहाँ क्यों चेक कर रहा हूँ? ये खोला हुआ है ना मैंने यहाँ पे। हो यहाँ पे, ओके जी। तो की चेक करना सी। अच्छा आया का आमेनोमा सही दिया हुआ है, C0 है, 378 है, आपका टैक्स 1693 है, 45 एंड 201। क्रिट रेट भी सही है। अगर आपने 4 पीस ब्लिजर्ड स्ट्रेट दिया हुआ है तो 45%। अगर कहीं पे भी ऐसा है कि जहाँ पर आप 10% के अराउंड क्रिट रेट को सैक्रिफाइस करके अपना क्रिट डैमेज बढ़ा सको तो वो कर लो। कोई आर्टिफैक्ट अगर ऐसा है जो आपका क्रिट रेट ले रहा है लेकिन आपको क्रिट डैमेज दे रहा है तो वो आप बढ़ा सकते हो। अगर वो नहीं कर रहा तो ये काम मत करना, बाकी सब सही है। शना दिखाओ 2986। हाँ ठीक है शना, ठीक है। लिथिक स्पीयर दिया हुआ है, ठीक है। आओ भाई बनाना शेक पी लो, आओ। $80 to 90 कितना बुक्स लगता है? 70 to 80 to 90 बुक्स बहुत सारी लगती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुक्स लगती हैं। इतनी लगती है कि मेरे पास बुक्स सारी ख़त्म हो गई है। अब मैं ना तो नाहिदा को बढ़ा सकता हूँ आगे, ना मैं कुकी को बढ़ा सकता हूँ आगे। मस्त क्वेस्ट है ये, मज़ा आएगा। हाँ ब्रो आर्टिफैक्ट सही करेंगे, है ना, ये करें ना। अब बाकी प्रतीक की क्या देखनी थी भाई? प्रतीक हमें आपका क्या देखना था, क्या दिखाने वाले थे तुम अपना मुझे? कहाँ गया यार मैसेज प्रतीक का? प्रतीक का मैसेज कहाँ गया? मेरी कुकी देखना, स्पेशली EM ईयर। अच्छा तुम्हारी कुकी, तुम्हें तो मैंने ऐड किया हुआ है। कुकी लेवल 90। ओरे बाप रे भाई, जीत गए तुम जीवन में। आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। साइफोस दी हुई है, R2 साइफोस दी हुई है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 2 पीस गिल्डेड, 2 पीस वॉन्डरर, मैंने भी यही दिया हुआ है। सैंक्टिफाइंग लाइन 9 कर दी, सही है। इसको भी बढ़ा दो, जो इसकी क्यू है, क्यू को भी थोड़ा सा बढ़ाओ क्योंकि ये भी काम आती है। फवोनियस लैंस ज़्यादा बेटर है, बड़े प्लेयर्स उसी को रिकमेंड करते हैं। हीरोज बिट नहीं है मेरे पास और वेपन्स अपग्रेड मटेरियल भी नहीं है। सबकी कहानी यही है ब्रो, सबकी कहानी यही है भाई। कुकी बहुत मस्त है तुम्हारी, जीत गए तुम, जीवन में जीत गए। चीयर्स। चलो यार क्वेस्ट आगे बढ़ाई जाए, क्वेस्ट आगे बढ़ाई जाए। There चलो are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. ER देखो, अरे यार ER रह गया। ER की जरूरत ही नहीं वैसे तो, So लेकिन that देख लूंगा elemental मैं। life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? 42 ER वेपन के पैसिव से ही मिला है। ओह Wouldn't it already have become the withering like the others? There is a chance that it could avoid that end using the power of something here.
I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Teyvat long ago. Okay. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Teyvat. अच्छा. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Oh. जो chasm में निकल कर आ रही है. Yep. It's just like soap bubbles that rise to the water's surface. Kazuha, there are no leaves in chasm. अच्छा हुआ there are leaves around. नीलू में 46 विश कर दिए हैं, नहीं मिली अभी तक. नीलू निकाल के रहे हो, तुम्हारे पास है? मतलब नीलू की टीम है अच्छी सी? Another strange metaphor, but Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike and hidden within the oozing filth. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. Okay. किधर जाने का है? या उधर ही जाने का है? ये पिलर कितने फोर्स से नीचे आया है? ये भाई सेलेस्टिया की न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं ये. Time to go. आर्कन सर, आपको डिफेंस सोर्ड पता है? 3 स्टार It's over there! जो बहुत. Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take... हाँ, क्या करते हो? आपको डिफेंस सोर्ड पता है? कहाँ गया मैसेज? 3 स्टार जो बहुत रेयरली मिलता है चेस्ट में. नहीं, कैज़म अंडरग्राउंड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डीप है. पेरिलस ट्रेल में तो वो बहुत बाद में कुछ ज़्यादा डीप थे. हाँ, वो तो देखा हमने, सबने क्वेस्ट में देखा था. नाहिदा, नीलू, शिंगचो और कुकी की टीम बनाएंगे. बहुत बढ़िया. ड्रैगन स्पाइन वाला भी इतना अंदर नहीं घुसा था. लो जी. Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. Clouds high. The birds call. One with nature. Teamwork is dreamwork. You can't run. Boom! Oh, we finally managed to rescue it. यार पता है, मेरे पास प्राइम का अकाउंट है, अमेजोन प्राइम अकाउंट है, पर मैंने अब तक उसको इससे लिंक नहीं किया. वो करना है क्योंकि प्राइम मैंने जो ना प्राइम में भी मिलते हैं रिवॉर्ड अच्छे खासे. तो तुम्हारे पास अगर वो है आयातो है तो नीलू की ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी. आपको क्या लगता है वो कैज़म की एनपीसी जिंगजाओ ऐसा कुछ नहीं ना था? वो लड़की का वो ज़िंदा है या मर गई? यार वो मेरे ख्याल से कैज़म के बहुत अंदर चली गई है. ठीक है, अब पता नहीं वो कब मिलेगी. हो सकता है फ्यूचर में कभी वो आए. नाहिदा, ट्रैवलर, नीलू, शिंगचो. देखो ब्लूम टीम अच्छी है, लेकिन असली मज़ा तो हाइपर ब्लूम में ही आता है. असली डैमेज तो उसी में है. Should be the life form from the prophecy. असली मज़ा तो मेरे दोस्त हाइपर ब्लूम में ही है. That light. ग्राउंडेड जियो श्रूम. Wait. Something dark is coming out. Something's not right. What's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has passed. Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it is still a form of dangerous power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long time. Oh no! But we still have tons of questions we need to ask. I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Traveler! Ooh. It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Let's see if we can think of another way. वो लड़की का स्केलेटन निकलेगा. कितने डार्क हो तुम लोग यार, इतनी डार्क बातें करते हो.
कैज़ में भी मराना, हाँ हाँ सब जगह। ये बेसिकली फॉरबिडन नॉलेज के ही अलग अलग फॉर्म है। कहीं पे विदरिंग जोन, कहीं पर ये ऊजिंग मड है ना, कहीं मराना। प्राइम गेमिंग पे फ्री का रिवॉर्ड जीते हैं। अच्छा शिखर भाई, डेंड्रोन हाइड्रो, अच्छा वो उनको बता रहे हो। आपके पास कोकोमी है तो और भी अच्छा है। प्राइम गेमिंग पे फ्री के रिवॉर्ड जाते हैं। अच्छा Oh, yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. You want to use its power, but The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. अगन सर, मैं सोड का पिक्चर भेज रहा हूँ जो मेरे अकाउंट में है। मेरे डिस्कॉर्ड भेजो, देखता हूँ। don't understand. This no good, that no good. Save lives and fortunes. Yes, I understand, but this is our only chance to return home. We cannot afford to be careless. डायना का रख लेंगे, शील्ड देगी, हीलर की जरूरत नहीं है। हाँ डायना सही It's है। okay. There's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried. ट्रैवलर के चारों तरफ 2 सील्स देखी हैं यानफे की? कभी नहीं देखी ना? यानफे की सील्स हैं 2। डायोना क्रायो है, लेकिन अगर डायोना तुम्हारी C6 है तो एलिमेंटल मास्टरी देती है बहुत ज़्यादा। सेंड कर दिया। ट्रैवलर्स हैंडी सोर्ड, हाँ ये सोर्ड तो पता है हमें यार। ये सोर्ड तो अच्छी है, लेकिन किसको देनी है सोर्ड? ये किसको देनी है? यानफे की सील्स 2 वो भी। Lord of Dendro, and you others. How long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? अल्बेडो को, मेरे पास अल्बेडो की 4 स्टार सोर्ड है। क्या नाम है उसका? सिनेबार स्पेंडल, वो मेरे पास है, पर मेरे पास अल्बेडो है ही नहीं। कैज़्म के अपसाइड डाउन सिटी थी, वहाँ भी पहले सिविलाइजेशन थी शायद। हाँ उसी सिटी को तो न्यूक किया था इन्होंने, ये सेलेस्टियल नेल भेज के। Wait, did you get smaller again? Did you get smaller again? I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. ये रुख देवता ही है। ये इनको क्योंकि ये सब रुख देवता को भूल चुके हैं, तो इनके हिसाब से अब ये सोचते हैं कि कुसनाली ने ही ये सब किया था, ये सारा काम। लेकिन कुसनाली खुद ही याद नहीं, क्योंकि वो तो थी नहीं उस टाइम पे। To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me.
Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. As you can see, I won't last much longer. I understand, and I'm sorry, but ये सब रुख देवता की थी, नाहिदा नहीं थी उस वक्त और सबकी मेमोरी में रुख देवता उड़ चुकी है, इसलिए सबको लग रहा है कि नाहिदा ने किया. can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro Dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the Dendro Dragon's heart of Oasis operates. चैट मिस नीलू टीम में ओनली हाइड्रो एंड डेंड्रो कैरेक्टर अलाउड है, नहीं तो नीलू के स्पेशल ब्लूम नहीं बनते. यार नीलू के बारे में देखो, हो सकता है मुझे नीलू का कोई आइडिया नहीं है. नीलू मैंने ना मेरे पास है, ना मैंने कभी उसको ज़्यादा ट्राई किया खेलने का, तो हो सकता है यू नो बेटर. The Dendro Dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. It too is nearing the end of its power. However, if you are able to reactivate its heart of Oasis using the fire seed, then the Dendro Dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Poor things, they didn't know the secrets. Oh, so the heart of Oasis is a pep source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the fire seed to save me? Why? What's wrong? That's... never mind. It's not your fault. You didn't know. The fire seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. All right. Aside from being able to heal the Dendro Dragon, the fire seed can also resonate with the heart of Oasis. Okay. In other words, you'll be able to find the Dendro Dragon by following the guidance of the fire seed. But you should hurry. There is little time to waste. What about you? Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. वे बचा तो लिया, खड़ा तो हुआ है. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to save the Dendro Dragon. Our past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. ये हमारे सामने मरने के लिए बैठा था, गया. ये अपोकलिप्स जो है इन लोग बोल रहे हैं ये कैटेक्लिज्म से रिलेटेड है या प्राइमोर्डियल वंस और 7 सॉवरन की लड़ाई के वक्त का है या उस वक्त का किंग दशरथ ने फॉरबिडन नॉलेज यूज़ किया था. किंग दशरथ ने जब फॉरबिडन नॉलेज यूज़ किया था ये उस कैटेक्लिज्म की बात कर रहे हैं, कानरिया की कैटेक्लिज्म की बात नहीं कर रहे लोग. ये ओह, तो ये जो एलिमेंटल बीइंग्स हैं अगर ये सुमेरु में अबव ग्राउंड हैं तो अपने मरने के लास्ट में विदरिंग जोन बन जाते हैं, और अगर एक कैज़्म में मरते हैं तो ये oozy filth बन जाते हैं. समझ गया. Can you use the lumen stone once more? I can still feel its elemental power. Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true and it's very happy right now. Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter, and our home has been saved.
There is nothing more important than being together with family. Let's go! चलो जी होम चलते हैं होम लेट्स गो होम It's not much further. Follow me. We're close now. ओके लीड द वे मैम थोड़ा ऊपर जाके देखें क्या है आसपास अरे ओके ज़्यादा कुछ नहीं वहीं चलते हैं चलो अब ये हिली चल का टूल यूज़ कर रहा है अच्छा पत्थर यूज़ कर रहा है द सैंड्स ऑफ थ्री कैनाल अब मज़ा आएगा अब भी मज़ा आएगा ना बिडू I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. ओके यहाँ जाना है एडवांस डीपर इनटू द सैंडस्टोन लो जी आ गए We won't be able to see anything if ऑल्सो we keep वन going that लास्ट थिंग way. उस चेस गेम में फटुई हैव चेकमेट इन 6 मूव्स मे बी 5 Hey, look! Something's over there. We found it. A pep, the Dendro Dragon. गाइस मुझे ज़रा पैंट चेंज करके आनी पड़ेगी मुझे पतलून चेंज करने की ज़रूरत है ब्रो क्या साइज है इसका ड्रैगन बॉल जी का है ना हाँ टट इज गेम हेलो भाई साहब शेनरॉन आ गया निकालो अपनी अपनी 7 ड्रैगन बॉल्स और लेट्स एक्चुअली मैं थंबनेल ये होना चाहिए था आज का इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ वेट स्क्रीनशॉट का है ये रहा ब्रो चैट थोड़ा छोटा नहीं हो गया अरे यार अब नज़र आ रहा है चैट वाह कितनी छोटी चैट नज़र आ रही है वीडियो अब चैट नज़र आ रही है बहुत छोटी सी भाई साहब तो बहुत बड़ा ही है I knew it would be big, but not that big. Puny god, puny human, leave my domain. ये क्यों नहीं लड़ने आया हमसे तो जी, अब चैट आ रही है हैं? अब इससे याद आया कि यहाँ पे चैट भी होनी है ये गॉड से नफरत करती है हाँ Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. ये लड़की लग रही है वॉइस के हिसाब से हाँ लड़की है लड़की ही है दोस्त A pep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, brewer. अच्छा अब आपको तो पता है ये बूअर है You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time.
Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. आमुन आमुन कहीं उसका नाम तो नहीं है हमारे अरे आमुन उसका नाम तो नहीं है यार हमारे यार वो बंदा जो है यार किंग दशरथ का नाम भी आमुन हो सकता है शायद किंग दशरथ ही है You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? आमुन जामुन क्या बात है क्या जोक मारा है Let go. For only a moment, foolish boor. You will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the 7 nations. In your dreams. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the God of Wisdom cannot escape from. जोंगली जितनी होगी हाँ I have Ages की ना, paid हाँ। dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave! Careful, something's coming. Ah, what is that? Hyman's never seen that before. ये क्या आइटम है वे It's our family. ओह Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. External form not important. Inner nature say. It is possible that she is also being controlled by the Abyss Order like Dwalin was. Maybe. The composition of their elemental power is identical to ours. In other words, they're residents of our homeland. राइडन दीदी ने खुद के ड्रैगन को पेल दिया था हाँ वही तो Is this what they've become after experiencing the apocalypse? This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. और भी मैं पाएगा सुमेरु का भगवान करे ना आए बहुत एक्सपेंशन हो चुका सुमेरु का इससे ज़रूरत नहीं है इस ड्रैगन ने बोला कि अदर ड्रैगन्स उनके टर्म में आ गए मतलब कि अदर ड्रैगन दूसरे ड्रैगन्स ने वो कर दोस्ती कर ली या सबमिट कर दिया Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! हाँ सब कह रहे थे कि पर ये ड्रैगन नाहिदा का ड्रैगन थोड़ी है इट इज़ जस्ट अनदर ड्रैगन गाइस जो भी नया बंदा है प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक कर देना बटन दबा दो लाइक का नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन फटाफट दबा दो प्लीज गाइस प्लीज ठीक है ये लास्ट पार्ट है सुमेरु का मॉन्स्टर्ट का पोर्ट आना है अभी तो पहले वो आएगा फाउंटेन आएगा अभी तो सारा They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. Everything else has been discarded in the process of adaptation. हाँ ओरोबाशी उसका सांप नहीं था ओरोबाशी ड्रैगन भी नहीं था So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across to that? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. ओके All they want to do is survive. ठीक है भाई मैं उनके साथ जेंटल रहूँगा मैं खाली ई प्रेस करूँगा क्यू प्रेस नहीं करूँगा ठीक है Judgment! The wind knows me. Motion to compel!
मैंने खाली ई प्रेस किया है, so I was gentle with them. Paimon thinks they used up all their strength. They don't seem aggressive anymore. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. गोल्डन एप्पल क्या है? टेक्निकल हेल्प. सर भाई टेक्निकल हेल्प, तुम पहले ये बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ थे हैं? कुछ ज़्यादा दिन नहीं हो गए तुम्हें आए हुए. गोल्डन एप्पल क्या है? गोल्डन एप्पल एक आइलैंड है जो क्ली की मॉम एलिस ने बनाया हुआ है. लिटिल जेंटलमैन, ओनली ई नॉट क्यू. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state. Their external form has become their shackles. It seems only the fire seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use the fire seed again. गोल्डन एप्पल हो सकता है दोबारा आए 3.9 के अंदर या 3.8 में. सही कह रहे हो. Everyone goes home, not just us. This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. Taking responsibility is not as same as preventing. अगर कुछ गलत होता है तो. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. यार 3.9 तो स्किप होना चाहिए. बहुत लंबा हो जाएगा यार. 3.9 तक अगर इन्होंने खींचा तो 3.8 is too much. मुझे तो 3.6 से too much लग रहा है. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a Pep again. अब बाय द वे हर आर्कॉन के सेकंड स्टोरी क्वेस्ट के बाद वो लंबा सा डायलॉग वाला लिस्ट आती है जिसमें कहते हैं कि ओके अब आपको नेक्स्ट यहाँ जाना है. ठीक है, जैसे कि वेंटी ने कहा था आपको लियुए जाना है, फिर वहाँ पे जोंगली ने कहा नेक्स्ट यू हैव टू गो टू देयर, फिर वहाँ पे याईमिको ने कहा नेक्स्ट यू हैव टू गो टू सुमेरू. हो सकता है इसकी लास्ट में भी वो लंबी सी क्वेश्चंस की लिस्ट आए जो आर्कॉन्स आंसर करते हैं. 0.9 वाली सीरीज नहीं है गेंशिन में. कुछ नहीं पता यहाँ पे आ भी जाए. After all, that giant Dendro dragon is also your family. Maybe it would listen. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Yes! Thank you. All right, here it goes. हाँ वो लंबी क्वेश्चन के लिए आर्कॉन के एंड में. अबे यार ये मेरे मुंह के ऊपर क्यों आ गई है. Family. We will all be able to go home soon. Whoa, it's shining now. ओह पोकेमॉन इवॉल्व हो गया. पिकाचू राइचू बन गया. I want to be the very best, like no one ever was. Dun, dun, dun. Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. अच्छा टेक्निकल हेल्प ने कहा मेरे यहाँ 11 से 4 लाइट ही नहीं रहती अभी. ये भाई तुम तो बहुत टाइम से नहीं आए. तुम्हारे टाइम अभी कहाँ से लाइट जानी शुरू हो गई तुम्हारी 11 से 4. पोकेमॉन विकसित हो गया. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. एनी गेस ग्रेट सिनर की आइडेंटिटी. इस टाइम जो रनिंग कैंडिडेट है ग्रेट सिनर की आइडेंटिटी में वो है किंग दशरथ. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. यूपी से हैं भाई. मैं भी क्या कहते हैं यूपी में ही रहता हूँ नोएडा के अंदर. This is the last part. इतनी क्या लाइट जा रही Let's है. go. रॉकी हाई.
लेट्स गो। किधर जाना है? इधर? कितना दूर है? अरे कुछ ज़्यादा ही दूर है ये। यहाँ से चलते हैं। हाँ, ये रास्ता अंदर जा रहा है ना। ना 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 ना। ओए, ये तो वहाँ पे लेके जा रहा है जो हमने वो, ये तो वही वाली गुफा है जहाँ पे बहुत बड़ी लाइट सी आ रही थी। वहीं जाने क्या? ये तो वही वाली गुफा है जिसके अंदर लाइट आ रही थी, जिसमें बहुत बड़ी केव है जिसमें लाइट निकल रही थी। वही वाली गुफा है ना ये? किंग गेमर आ जाओ भाई, आ जाओ ब्रो, आपको बॉस फाइट करना होगा। मैंने ब्लॉक कर दिया। क्या ब्लॉक कर दिया? You can't run! Incinerate! अब कहाँ जा रहा हूँ मैं? अच्छा, अंदर तो जाना है। ये तो वही वाली केव है भाई। Who is Raven? Judgment! Motion to compel! You can't run! अरे यार, ये अपनी शील्ड के मुझे छुपा हुआ है। Judgment! बट न्यू वर्ल्ड बॉस है ये। टीम चेंज कर लो। क्या टीम लेके जानी चाहिए यहाँ पे, मुझे बताओ। मुझे लगता है जो हेवनली प्रिंसिपल्स है वो रिप्लेस किया गया है। जो अबिस वाला है वो ओरिजिनल प्राइमोर्डियल वन है। सेकंड वन हु केम है जो सेलेस्टिया रूल कर रहा है, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग है भाई, बड़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे क्या टीम लेके जानी चाहिए मुझे बताओ। राइडन की टीम ले जाता हूँ ना इस बॉस के लिए, और क्या चाहिए? राइडन नेशनल। One with nature. Incinerate! राइडन नेशनल ना? हाँ। लेट्स गो। यस, फाइनली वो जगह आ गई जिसका हम सबको बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये है क्या है। Huge. Could this be where the Dendro Dragon lives? Yeah. Who knows what's inside that cave? भाई हमने जाने की कोशिश तो की थी। इस केव में अगर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करो ना, उसको लेके, सायू को लेके, तो सीधा स्प्रिंग वेल में फेंक देता है उठा के। ब्रो टेक शोगन काजुहा, राइडन नेशनल। हाँ, कुछ काजुहा की ज़रूरत नहीं है, ये टीम अच्छी है। और गेंशिन का मतलब है भी होता है फेक गॉड। ये नहीं पता था मुझे। ओरिजिनल गॉड्स इम्पैक्ट। अच्छा, चाइनीज़ के अंदर गॉड को गेंशिन बोलते होंगे। Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. That will be impossible if we can't get it to cooperate with us. But how are we gonna do that? It doesn't seem to want to help at all. I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. चाइना का माल है। हाँ, चाइना का इकलौता माल है। जो कहते हैं चाइना का माल सुबह चलो, सुबह लिया शाम तक चले ना चले पता नहीं। ये चाइना का इकलौता माल है जो पिछले 2 साल से चल रहा है और अगले 5-6 साल तक चलेगा। हाँ, मतलब ऐसा भी एक तरह से बोल सकते हैं। ओरिजिनल गॉड प्राइमोर्डियल वन वाज रिप्लेस विद फेक गॉड। अच्छा, Wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing to fight, you should consider the life you've produced.
भाई तेवात का कोई भरोसा नहीं, वो तो है। प्रतीक चाइना की लड़की से बात कर रहे थे, वो क्या बोल रही थी, स्क्रीनशॉट देंगे। तुम लड़कियों से बातें करते रहो। वॉइड। No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? पिन मार रही है उसे। Please keep everyone safe. And send us to the homeland. यार अपने को गुफा के अंदर जाना था, हम कहाँ पहुँच रहे हैं? Nahida, where are we? नाहिदा गई। Huh? And what about the traveler? Where'd he go? I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. नाहिदा स्कारब उठाता है। नाहिदा यार सिर्फ ना फूल पत्तियाँ उठाती हैं। मुझे अब इस एरिया में जाना है। तारतागले और स्कारामूश ऑलरेडी वहाँ ट्रेनिंग कर चुके हैं और तारतागले की मास्टर स्कर्क भी वहाँ रहती है। स्कारामूश ने अभी इसमें ट्रेनिंग नहीं की, खाली तारतागलिया नहीं की है। Well, then let's go have a look up ahead. Paimon's feeling really worried. और कहते हैं वो स्कर्क जो है जिसने तारतागलिया को ट्रेनिंग करवाई थी, वो हेक्सन सर्कल का पार्ट है। Yep, let's go. I wouldn't worry too much. The traveler's no pushover. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having the traveler around. हाँ हाँ कोई नहीं। Let's hurry. He might be just up ahead. पाइमन तो ऐसा करती है उसकी औरत की तरह कि अरे मेरा मर्द कहाँ गया। लो जी आ गए, अप के उसमें आ गए हम। What's that? जस्टर ने वो एक्सपीडिशन में भेजा था बहुत बार अब इसमें। अच्छा ऐसा। That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. Bro, did you complete the new event? नहीं अभी नहीं। The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Events are secondary to me. मेरे लिए स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक जगह पे कई एनिमी थे साथ में, वो जगह कहाँ है? एक जगह कई एनिमी साथ में? Then let's hurry ये and नहीं पता light आइडिया it. भाई, कहाँ की We बात कर still रहे हो? need to find the traveler. All right, hang on. वो गायब हो गया? The fire seed! What happened? It shattered. It was even more unstable than I expected. अब ले रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रही थी ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगी, अब ले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। But why? We barely used it. I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. लो हो गया काम। Let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh. Do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. अब ले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. Okay. You're gonna become the fire seed? Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. मरने वाली क्या ये? I might, however, become even smaller. Oh, come on. What happens
if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? क्या होता रहता नाहिदा के साथ? That's all right. None of that matters compared to the dangers that the Pep is facing right now. जितने आर्कॉन है भाई सबकी जिंदगी के वांदे लगे हुए हैं. कभी किसी का कुछ चल रहा है, कभी किसी का कुछ चल रहा है. No, wait. और ये सैक्रिफाइस करने पे तुली रहती है. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? ये सैक्रिफाइस करने पे लग रहती है. मैं मर जाऊंगी. Maybe you and the traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. मतलब ये मरेगी नहीं, she will revert back to her original form और फिर ये ग्रो करेगी, ग्रो होके फिर से ये 2-3 साल की बच्ची बन जाएगी. You can't be serious. जैसा इसको वो लोग उठा के लेकर आए थे, सेजेस जब लेकर आए थे इसको, तो ये बहुत छोटी थी. If the traveler were here, he definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I don't approve. Fuck the dragon. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. फिर हम लोगों के पास जो नाहिदा उसका क्या होगा? वो भी ऐसे रहेगी. वो भी छोटी सी पत्ती बन जाएगी. फिर तुम एक पत्ती से लड़ोगे. No. Please, no, Nahida. लो जी कट सीन आ गया. ले आ गया. The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. Who? We've all grown on this long journey. Oh, finally ये बचा रही है. Thank The God. purpose of that growth was to return home. Then our wishes have come true. क्रायो आर्कॉन कब आएगा? आएगा नहीं, आएगी. Your power. You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! No, ये आ गया. Warden of the Last Oasis. Evolved from an apocalyptic millennium. To imagine such growth could be achieved is Because you're carrying everyone's hopes and dreams. yes, finally. Thank you for protecting me with your elemental power. Goodbye. We may never meet again. I will wait for her no matter how long it takes. This is the agreement we made.
let's go. Shine down. Luba, get them! Let me weave you a verse. अबे बहुत हो गया. Everybody stand back. The Temple of Wisdom! At the right hand, into the button. इजी था ड्रैगन, इजी था. दोबारा आएगा क्या? हाँ दोबारा आ गया. Hey! Illusion shattered. Wonderful work. It's new, which means it will be long. Done. Can you hear Paimon? Say something! You fungi said that your form didn't matter, right? And let us know that you're alright! Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. Cool यार, बहुत बढ़िया. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power. Just as they did. They will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. शेखर सिंह ने पूछा सभी आर्कॉन फीमेल क्यों है वेंटी और जोंगली को छोड़कर? क्योंकि जिन लोगों ने गेंशिन बनाई है वो सारे के सारे वीब्स हैं और उनको पता है कि फीमेल ज़्यादा बिकती हैं. But that's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. That's how it's destined to be. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me, destroying you and your people serves me no purpose. यूसर्पर फ्रॉम बियॉन्ड, ये प्राइमोर्डियल वन है. Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. मेरा डैमेज कब इतना होगा? इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ. Put up with you. I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? ये तो मुझे भी जानना है. It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world and led us in a fight against the order established by the outsiders. नीबेलोंग, द ड्रैगन किंग, इसके बारे में तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं. Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. The world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash.
But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. वैसे मेरे पे राइडन नहीं है। कोई नहीं, अब अगला बैनर आएगा तब निकालना। As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. Sand dunes arose where there was only forest. And it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. यही तो सबके साथ हुआ। But you still didn't give up, did you? Because of Amun al-Ahmar. आमन अल अकमार यानी कि स्कारलेट किंग। स्कारलेट किंग। वैसे मेरे पास है हुताओ, नाहिदा, योइमे, वंडर हो, थोड़ी तो सही है। Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. यही गॉडेस ऑफ फ्लावर ने दी थी। और यहाँ पे कोई मुझे कह रहा था ना कि यू आर रॉन्ग, कि उसने पहली बार यूज़ नहीं की, किसने पहली बार फॉरबिडन नॉलेज यूज़ की। तो यही तो बात हो रही है, फॉरबिडन नॉलेज जिसने तो यूज़ की। His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. I was right. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. Oh. At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones. While others chose to flee after experiencing pain and agony. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart. Even to this day. I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Al-Ahmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. ये खा गई स्कारलेट किंग को, किंग दशरथ को। However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. But even then, I still believed that his insanity was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Boer, and the rest of you, Tiny Boer, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? I wonder. Wow. गाइस जो भी यहाँ पे नया है स्ट्रीम को लाइक कर देना, अगर अभी आए हो तो बिल्कुल नए हो सब्सक्राइब कर लेना। वाह यार क्या स्टोरी थी। Hey! मजा आ Looks गया। like we've been sent back out! Still in one piece, too! The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. और कुछ लोग कह रहे थे कि ये नेटलैंड का रास्ता, यहाँ से नेटलैंड के लिए जाते हैं। It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their journey and their feelings for their homeland. हर वीक इसको पीला करेंगे। Each opportunity for growth is unique in its own way.
एनिमी लोग मजे लेते हैं मेरी हुताओं के, तो हुताओं को बिल्ड करो ना अच्छे से। Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The hydrofungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. ओह अभी रिटर्न तो करेगी नहीं। Let's hurry and go take a look! How are we going to explain all the complicated things that happened? खानरे का डोर नहीं आया क्या? नहीं खानरे का डोर नहीं, ये एपेप का डोर है ब्रो। मैं ज़रा आगे जाके देखना चाहता हूँ एक बार। I want to go and see. अबे ब्लॉक कैसे है? पहले तो जाने नहीं देते, तब तो ब्लॉक कर दिया इन्होंने। ओह अच्छा, पहले ये एरिया यहाँ तक बंद था ना। ओह अब तो जाने नहीं दे रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई इनविजिबल बैरियर है यहाँ पे। काट दिया क्या होए वालों ने? क्या काट दिया होए वालों ने? बेसिकली शायद उस केव के अंदर हम जा नहीं पाएंगे, हमें बस टेलीपोर्ट करना होगा ड्रैगन पे हमेशा उसको मारने के लिए। ये बेचारे यहीं बैठे हैं दोनों के दोनों, तब से इनकी पूरी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो गई। इसकी एक की माँ चली गई, एक का दोस्त चला गया। They're still here! Have they really been waiting here all this time? ये क्या था? OMG के बाद क्या लिखा भाई तुमने? We're back. न्याम न्या, तेरी माँ गई बेटा, उसने बचा लिया हमें। हाँ I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It's said that Noor is its most important family member. ओह इसके बच्चे का नाम नूर था। मैं फाइट के बीच में भूल ही गया। नूर मीन्स लाइट। That's your name, isn't it? This is wonderful. So it has left traces of itself after all. बाय बाय टेक्निकल हेल्प्स। मज़ा आया स्ट्रीम पे भी। कोचिंग का टाइम ओके ब्रो। अब आर्कन भाई इन्हीं फंगाई को पेलेंगे। क्या करें यार, अब चाहिए तो चाहिए ना। ये तो होयोवर्स वाले ने बहुत गलत किया हुआ हम लोगों के साथ। कितने क्यूट चीज़ों के पीछे असेंशन मटेरियल छुपा रखे हैं। They will definitely meet again someday. सो सैड। यहीं से शुरू हुआ था हमारी गेम, हमारा क्वेस्ट यहीं पे ख़त्म हो रहा है। हो गई भाई, क्वेस्ट ख़त्म हो गई। अब मैं डूब के मर जाऊंगा। तो दोस्तों नाहिदा की स्टोरी क्वेस्ट फाइनली ओवर। बहुत मज़ा आया, बहुत सैड भी हुए। नाहिदा की स्टोरी क्वेस्ट हमेशा सैड होती है, ये तो है। नाहिदा स्टोरी क्वेस्ट आर ऑलवेज वेरी सैड, पर क्या कर सकते हैं यार, यू नो। इस बार सिबलिंग्स के बारे में नहीं पूछा। इस बार वो चीज़ नहीं हुई। लास्ट में बहुत सारे लंबे क्वेश्चंस नहीं आते जो पूछने होते हैं, वो नहीं पूछा। Thank you for अब आरना रिक्वेस्ट करो वापस। हाँ क्यों नहीं, Ad Astra Abyssa. यही तो जीवन में रह गया।
ओह। भाई लास्ट में क्वेश्चन आते हैं वो आर्कन क्वेस्ट के एंड में आते हैं। नहीं, इसके लास्ट में भी आते हैं। स्टोरी क्वेस्ट के एंड में भी कुछ तो होना चाहिए यार। और वैसे भी तब आता है जब अगला रीजन तैयार होता है। जब अगला रीजन तैयार ही नहीं है आने को अभी कम से कम 2 अपडेट तक, तो क्या फ़ायदा। लेकिन अब एक पंगा हो गया। वो पंगा क्या है कि मेरे पास सारी टैलेंट बुक्स, असेंशन मटेरियल सब ख़त्म हो गया है। बेसिकली मुझे अपनी कुकी को बढ़ाना है आगे, और मैं उसको बढ़ा नहीं पा रहा। लो, असेंट तो हो जाएगी। Earning an advanced certificate is not easy. अब मैं उसको लेवल अप नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है ज़्यादा। देख रहे हो 60 से 70 लेके नहीं जा सकता इसको मैं। क्या असेंट करूँ इसको मैं यार, है ना। ये 70 पे अटक गई, नाहिदा 70-80 पे अटक गई। कहाँ गई नाहिदा? मेरे पास बचा ही नहीं, मटेरियल नहीं बचा इनको आगे बढ़ाने के लिए। नाहिदा जाके पूछ सकते हैं पहले से अलकज़ेज़ी के टॉप पे। अच्छा, अब मैं भी सर मटेरियल चोरी करूँगा, समझ रहे हो? समझ रहे? अच्छा हाँ। मतलब तुम्हें नाहिदा मिल गई। उफ, चलो यार ये तो डन हो गया। अब बची है क्या? स्टोरी क्वेस्ट स्प्लेंडर स्काई दैट डे, ये बची है। और एक ये तो मेरे ख्याल से वो है जो अभी नई इवेंट क्वेस्ट आई है, ये तो वो है। ये स्टोरी क्वेस्ट है, ये स्टोरी क्वेस्ट होगी कल, या मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे टाइम लगा तो आज शाम को, रात को स्ट्रीम करूँगा मैं। बहुत दिन से मैंने रात को स्ट्रीम नहीं की है, तो इस बार करूँगा। एंड आई विल डू द स्टोरी क्वेस्ट देन। अब यार मैं सोच रहा हूँ बैटल पास खरीद लूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी ये बुक्स नहीं बची ना, ये मुझे यहीं से मिलेंगी। देख रहे 2 4, सोच रहा हूँ बैटल पास ले लूँ। 900 वाली ले लूँ। कौन दिला रहा है बताओ? कौन मेरा बैटल पास स्पॉन्सर कर रहा है? कौन महान आदमी यहाँ पे मुझे बैटल पास स्पॉन्सर करके दे रहा है? बताओ। भाई GTA 5 नामक गेम में सही बात है यार, मैं GTA 5 भूल ही गया। GTA 5 भूल गया मैं, और क्या भूल गया? एक गेम और थी ना, मैं भूल गया। मैं गॉड ऑफ वॉर भी भूल गया। मैं पर 20 से पहले मतलब समझा नहीं मैं 20 से पहले का मतलब नहीं समझा। ये टीम है मेरी हाइपर ब्लूम टीम, ये है अयातो, काजुहा, नाहिदा और कुकी। मैं दे दूंगा आपको बैटल पास, दे दो यार। सिर्फ मुझे 10K दे दो। उसमें से 900 का आपको दे दूंगा। वाह, मैं दे दूंगा आपको बीपी, पर टाइम लगेगा थोड़ा, 22 से पहले तक दूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। दैट्स ओके। ओके गाइस, तो नाहिदा की स्टोरी क्वेस्ट आज हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, नाहिदा की स्टोरी क्वेस्ट को यूट्यूब से डाउनलोड करके, अभी यूट्यूब से डाउनलोड करूँगा उस पूरे वीडियो को मैं, और फिर उसको एडिट करके अलग से वीडियो बना के डालूंगा स्टोरी क्वेस्ट का मैं। ठीक है, ये करूँगा, ये काम अब करूँगा मैं। अभी डाउनलोड पे लगाऊंगा उसको कम से कम मैं अभी थोड़ी देर के लिए ना। ओहो, क्या फ्लेयर आ रही है, क्या फ्लेयर आ रही है ना। अब इसको कितना टाइम बचा है? अब इसको 2 दिन 10 घंटे। अब इसको वो होने में प्राइम गेमिंग पे फ्री 60 प्रीमोज मिल रहे हैं। यार प्राइम गेमिंग को अटैच करना है मुझे भी, करूँगा अटैच। डोला सही है ना मेरा? देखो डोला, देखो डोला। ओए कितना बेकार आदमी है भाई।
नेटवर्थ कितनी % मेरे नाम करोगे हैं? कितनी नेटवर्थ करने वाले हो मेरे नाम, ये बताओ कितने %? चलो गाइज अभी तो इतना ही, ठीक है। अब रात को आएंगे, रात को बाकी की खेलेंगे। सोचता हूँ रात को आने का, बताऊँगा कि आऊँगा कि नहीं आऊँगा, वो तो मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर कर ही दूँगा। प्राइम गेमिंग में फ्री ग्लाइडर मिल रहा था, अगर 4 क्लेम किया है तो। यार प्राइम गेमिंग का ना मैं चेक करता हूँ कि कैसे मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो गाइज बहुत मज़ा आया, ठीक है। अब मिलता हूँ तुम सबसे बाद में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते स्ट्रीम को लाइक मार दो यार अगर किसी की रह गई हो तो, ठीक है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, किसी ने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है तो। बाकी सारी बातें तो वहाँ पे करते रहते हैं पूरे दिन, स्ट्रीम एंड होने के बाद भी, ठीक है। और मैं ज़रा चेक करता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मुझे ना तो चैट नज़र आ रही है, ना ही अलर्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अमेज़ॉन पे जाकर ना, हाँ मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। थैंक्स फॉर स्ट्रीमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, ठीक है। और ठीक है, अगर रात को आया तो मैं शाम को मैसेज कर दूंगा डिस्कॉर्ड के अंदर कि मैं रात को आने वाला हूँ, ठीक है। और नहीं आया तो और जो लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर पा रहे और उनको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल नोटिफिकेशन का आइकन जो है स्ट्रीम पे वो दबा दो। अगर डिस्कॉर्ड पे नोटिफिकेशन आती है लोग वहाँ से आ जाते हैं, नहीं मिलता तो यहाँ दबा दो, यहाँ से तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। चलो गाइज ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को या कल, अपना कल सुबह इसी टाइम पे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय। It's